I welcome you all to this event. NUST IP Center of Excellence is being jointly managed by PTCL, NUST and Cisco Systems. The center has previously organized several seminars and workshops in networking domain, including data centers, MPLS, carrier Ethernet, and IPv6. The center aims to strengthen industry-academia linkages and promote international collaboration. The seminar today, titled as IPv6, A User's Perspective, is extension to the series of IPv6 seminars organized earlier. IPv6 is the next generation protocol which forms the basis for future communication networks. The seminar aims to provide knowledge of IPv6 benefits at the user's end. The first session would be conducted by Mr. Asif Kabani. The second session from 3 p.m. to 5 p.m. would be taken by Mr. Fakhar Mirza. Before getting started, let me briefly introduce to you Mr. Asif Kabani. Mr. Asif is a fellow in Internet Governance and Public Policy from Diplo Foundation, Switzerland. He is also a global member of Internet Society and plays a key role in representing ISOC international forums. He has served several Internet Governance forums at UNOG with UNDESA, worked for UNESCO, UNDP, UNODC, UNICEF, UNHCR, and other international NGOs in sustainable development through information communication technology. Please welcome Mr. Asif Kabani. मेरा नाम आसिफ कबानी है और मैं अपना तारुफ कराता हूँ। पहले तो अदील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमें मौका दिया आपके पास आने के लिए, और फिजान हमारे दोस्त हैं, इंटरनेट सोसाइटी के मेंबर हैं। आप हजरात का जिन्होंने सपोर्ट किया ये लगाने में, टाइम का आप सपोर्ट करेंगे तो आई डोंट वांट थिंग्स टू बी टू फॉर्मल, कीप इट एज बायलिंगुअल, एज मोर लर्निंग इंटरेक्टिव। तो आप लोग सब नज़दीक अगर आ जाएं तो मेरे लिए जिंदगी आसान। टॉपिक इज माइग्रेशन टू IPv6। तो इस पर ज़रा हम थोड़ी सी बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं जो फेमिलियर हैं IPv6 से। ये चले इसे सिंपल सवाल करते हैं और हर सवाल के साथ एक इनाम भी है। तो एक कलम मिलेगी आपको और फैजान बाकी और भी मेंबर उसमें भी चीज़ें देंगे। डॉक्टर अदील से डिस्कस हुआ। हाउ मेनी पीपल आर स्टूडेंट्स कितने हैं, प्रोफेशनल किस तरह से? आई विल फोकस माय डिस्कशन बेस्ड ऑन दैट। बताएं स्टूडेंट कितने हैं, प्रोफेशनल, फैकल्टी मेंबर्स एंड सीनियर्स, टेक्निकल, कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं कोई? NTC सॉरी NTC दैट्स गुड। सर आप लोग NUST इंजीनियर्स, ओके। So we have a good mix. So we keep it simple. Migration to IPv6, IPv4 to IPv6. How many people are you aware of IPv6? Raise your just hands. कोई बताना चाहेगा आप में से प्लीज? वेरी गुड। कोई और इनकी मदद करना चाहे या मामलत करना चाहे? कुछ और चीज़ों को कवर किया जिसका फ्रैगमेंटेशन वगैरह इन चीज़ों को जो IPv4 में थी और थोड़ा डिलेट आ रही थी, उन चीज़ों को कवर अप किया। आपको मेरी आवाज़ आ रही है कौन तक? ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। आप में से कोई वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? एनीवन? फिजान यू? Very good. Thank you very much all for your time, and thank you Aditya for inviting me here. Speaker profile is very simple. My name is Asif Kabani. I am basically Chief Technical Advisor for the United Nations in terms of the governance and the Internet. We are one of those few people who work with the pioneers of the Internet, Windsurf and all other people, who help them out, and we structured the Internet Governance Forum that basically looks after the Internet issues in terms of the physical infrastructure, the legal, the economic, social, political, warfare and everything. So it's a very different way. Today we're not going to touch so much of the Internet governance. We are here to just one of the 1% part, which is basically the how Internet societies, academic, business work together when there is a technological issue or a solution that needs to be worked out. So Pakistan Roadmap is something that myself, Adil and we have discussed, and I'm thankful to Adil and all the other academics who are helping us out find out the way. As you have heard that I am a global member of the ISOC, which is based in Geneva. Usually I'm mostly in Geneva and live here in Islamabad as well. So this volunteer work that I do for Pakistan as a global member and as a vice president, and I'm also restructuring Pakistan in terms of the new chapters as well. So we're looking to make new chapters in Islamabad, Punjab, Sindh, Karachi with the help of academic institutions, the heads of the computer departments, the business institutions,
institution, the public sector, private sector. So we have a viable internet society which basically helps in contribute. As Dr. Saab and we have agreed, I would just like to say that today, whoever is attending this seminar will be given a free membership of the Internet Society Global, as well as you can join the chapter and will also have a gift for them. So membership forms will be available with Shazan and myself, so we'll approve your membership right there, here, right now. So you will become the member today and you will contribute. Those who contribute, as Dr. Saab has asked me what you can do, you can attend meetings of the Internet Engineering Task Force. The next one is taking place in Canada. So you can go to Canada, San Francisco and all the other parts of the world. You can become an active part of the Internet Engineering Task Force and you get funded to do your researches and grants. I will give more information on the role of ISOC and other institutions how you can support. You can follow me on Facebook, Twitter and email as well. Today's agenda. If I'm going too fast, please make sure that I'm not that fast. Okay? आप लोगों के लिए agenda है it's migration from IPv4 to IPv6, solutions and issues, tools and techniques for migration, perspective of user which is you are, and stakeholder. And I have a Q&A for Pakistan resource and requirement so we can have a roadmap. I just wanted to clarify, I don't want to be too technical because myself, Dr. Adil and the speakers, we have agreed that I will keep the strategic and the principal part. Technical part will be covered by my fellow speaker who will guide you more on it. He is more technically expert and sound in that. और डॉक्टर अदील के बारे में तुम्हें क्या कहूँ, मतलब उन्होंने पूरी किताब इस पे लिखी हुई है, तो इनके लिए तो पहले बहुत ज़्यादा तालियां कि दुनिया इनकी किताब पढ़ती है और फॉलो करती है. You are blessed कि he is with you, so we really respect his work and research. और बल्कि आप बड़ी मजे की बात बताता हूँ, अभी AGC के साथ मिले तो मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो बस फाइल चला रहे हैं, काम तो अदील कर रहे हैं. So that's a compliment again. With the AGC is still relying that Adil will make sure that academic and business get synergy. जिस तरह वो introduction में भी आपने बताई. तो चलिए आप थोड़ी सी गपशप हो गई. Let's move to the main part. Internet Society का purpose है we help you facilitate open development standards, internet protocol, infrastructure of the internet. जो आप सारे यहाँ कर रहे हैं, next generation leaders are. जो next generation leaders बनते हैं, we give them very good capacity building training online course for 52 weeks. It costs around like 12,000 euros. But if you become a next generation leader, we give you the training, then we post you around the world in rest of the institutions, in internet governance forums and all the other places where you can start your career and take off and become an internet engineer. Education, which is one thing that I'm doing. I'm here to give in education with the help of your professors. Research related on the internet जो आप लोग करना चाहते हैं, that we also help you out. Activities at international level we facilitate. कि आपका काम अगर ऐसा है जो international level पे जा सकता है, we help them out. As you are aware that BlackBerry का जो top 10 एप्लीकेशन है वो जो है पाकिस्तान से लोग हैं. आपकी अपनी नस्ट यूनिवर्सिटी के कुछ आइपर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, we follow them and they will become the next leaders of the internet and they are making the protocols and standards of that. And they can we're making a lot of money even before graduating. So be a part and try to make internet as you like because the future of this internet is in your hands. We collect information, disseminate information that we are doing here. अदील साहब की एक बुक है जो मुझे भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी. इस तरह के रिसर्चेज हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं. असिस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज में which is required. Pakistan is alhamdulillah very fast. We are 16th in the internet and mobile penetration is huge. Except that we have an organization called PTA which is not too much interested in giving 3G license. So what will happen? It's an opportunity that हम 3G करेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट 4G पे जाएंगे. So I met a Khan Sahib who was blocking the road and I said, why are you doing it? They said, I have a car, it's my right. And I said, okay then. तो हमारे मुल्क में लोग ये समझते हैं कि उनका राइट है कि 3G लाइसेंस नहीं देना. नाराज ना हो कोई PTA वाले बैठे हैं सरकार वाले, क्योंकि वो रेवेन्यू है. जब वो 3G आएगा नहीं तो 4G पे हम डायरेक्ट मूव हो जाएंगे. बिकॉज द वर्ल्ड इज ऑन 4G, एंड्रॉइड्स आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए and internet has moved beyond to internet of things. So इसमें हम थोड़ा सा liaison करते हैं, गवर्नमेंट को भी ट्रेनिंग करते हैं, पब्लिक पॉलिसी. और डॉक्टर साहब के साथ और भी तो ही इज मेंबर ऑफ द टास्क फोर्स एज वेल एज रिकॉल ये माइग्रेशन की ऑल दैट. सो वी विल आल्सो बिकॉज इंटरनेट अभी हमारा रुका हुआ इसलिए कि बिकॉज 3G ना होने की वजह से मोबाइल फोन डज नॉट हैव मच ऑफ एन इंटरनेट. इट इज द ट्रेडिशनल सिस्टम विद 3G and 4G because everyone has the hardware. It is that perhaps रेवेन्यू कमाने के लिए हम इसको खोला नहीं है. तो I wish and pray to the operator and the government to with the PTA to resolve this issue as soon as possible so the nation and the children of this nation can have access to internet on the
एरियाज ऑफ सपोर्ट मुझसे कहा गया था, बताइएगा डॉक्टर साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन दिस. सपोर्ट हम करते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं इंटरनेट के, RFCs, यू नो दैट. इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स इज वन दैट आई सेड 82 में जो है वो अब हम करेंगे. 82 इट्स इन मॉन्ट्रियल. और आई एम ऑल्सो अगेन हैप्पी टू से कि नस्ट की एक स्टूडेंट है, शी वर्क्स फॉर वाइट्रैप, मजिया नाम आपने सुना होगा. वो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी नेक्स्ट. एंड डॉक्टर आमिर हु इज हेड ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी. But it will not stop here. If you are a member of the Internet Society, you will be able to, you know, file an application and you can be sponsored to go there, participate and do your researches on the Internet and make Internet programs. Like Dr. Amir is a member of RFC from France and Pakistan group as well. So I am very optimistic from NUST and here from this forum that you people will be part of the Internet Engineering Task Force and work with those people who have developed the Internet themselves and other people. थोड़ा बहुत मेरे साथ भी काम करना यार. Transfer of technical knowledge which we are doing here. We have a lot of material available on the standard protocols of the internet and mobile internet protocol. Some of the friends of students यहाँ बड़े मजे के थे, जिसने last time I came on last week mobile internet protocol पे काम किया था जुनैद ने और काफी लोगों ने. तो this is encouraging news that you people are working on the mobile IPv6 part as well. Education is in emerging country which we are doing here. Giving you an education. Keep a discussion very simple. I know sometimes it seems like we're going more technical, but sessions होते रहेंगे. Different universities में, academics में, business में, civil society, so you can join it. I'm just giving you an overview of it. So we'll give you more education, okay, how the internet and the future of the internet. I will come back in September for the semantic web and the future of internet, because by September we'll have a lot of changes in IPv4 to IPv6 and we are having an ICANN meeting in Singapore just right now for last 4 days. So the domain system used करते will also be changed into the new DLD systems. Those who are following that, so you will have a new internet coming by the end of the year, so which will be a little bit different from the one that you are using. So be a part of it and make it the best you want. Public policy education rooted in technical principle, it is not there. Dr. Saab is there in the forum. I would request to include more people. Fizan है और लोग हैं जो regular Pakistan होते हैं. I come in पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन चाहिए. मेरे पास कैबिनेट के कोई सीनियर लोग बैठे थे तो वो ऐसी लेम बातें कर रहे थे कि लग रहा था कि वो हार्डवेयर खरीद के जो है ना, फॉर देम इट्स ई गवर्नमेंट इज समथिंग लाइक गोइंग टू अ ब्लू एरिया एंड गेटिंग अ नेटवर्क स्विच. मुझे फोन आती है कि सर आपने 2000 में पेपर लिखा था, 2005 में इम्प्लीमेंटेशन हुई है एशिया रीजन में एंड यूरोप में, तो आप हमें बताया. मैंने कहा विच इंटरनेट गवर्नेंस यू वांट? ई गवर्नेंस. हम तो 3 पे काम कर रहे हैं, ई गवर्नमेंट 3.0. पाकिस्तान में तो ई गवर्नमेंट का मतलब ये कि ब्लू एरिया से जाकर हार्डवेयर खरीदो, जो वेंडर अच्छे पैसे दे रहा हो उसमें सेटिंग में. सो मैंने पूछा कि आपने पुलिस का ई गवर्नमेंट कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि हमने पुलिस वालों को सबको नेटवर्क कर दिया ना. तो मैंने कहा वो कंप्यूटर चलता कब है? कहते वो हम जाते हैं ना जिस दिन, तो हम ऑन कर लेते तो वो नेटवर्क पे आ जाता है. तो दिस इज नॉट ई गवर्नेंस, वेरी ब्रॉड. तो इंटरनेट से दुनिया चेंज हो रही है, अकाउंटेबिलिटी आ रही है इन एग्रीकल्चर सिस्टम, इकोनॉमी एंड ऑल दैट. So public policy education बहुत जरूरी है, because this is why how the emerging economy, आप देख लें तो Silicon Valley, it's in US, it's in India and other parts of the world. We don't have it. Our government is trying, they send a lot of people abroad for education and training and they come back, but they need public policy support as well. And I'm very happy to see कि I take the news as an opportunity. अगर वो फिर मजदूर हक साहब पकड़े गए स्टार टीवी का ड्रामा देखते हुए, तो it is not that. It is that he is using iPad, Nazar Abani uses iPad. That's an opportunity. We have to provide them the content. कि ट्वीट कैसे करते हैं? अमेरिका में सेनेट का होता है या यूरोप में मीटिंग्स होती हैं या नस्ट में भी उम्मीद करता हूँ कि फोरम्स इस तरह के होंगे, तो हम यूजुअली ट्विटर्स और ब्लॉगर्स रखते हैं. फिजान ने लास्ट टाइम पूरा रिमोट पार्टिसिपेशन सेटअप करके दिया था हमें माजूम में ट्वीटिंग पे और ब्लॉग्स पे हमने उनको पार्टिसिपेट किया था. बिकॉज हम यहाँ बैठे हैं लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पार्टिसिपेट रिट्रीट करना चाहते हैं रूरल एरियाज में, वो नहीं है, लेकिन इक्विपमेंट सारा लगा हुआ है हमारे पास. Isn't this a time we use the equipment, Dr. So let's work on this one. Internet will help you out. अब इन सब काम करने के लिए आपको कम्युनिटी चाहिए जिसके पास नॉलेज हो, उसकी मेंबरशिप. वही डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि इंकरेज करें, तो आप लोग आईसॉक एक तो मेंबर्स बने. पाकिस्तान चैप्टर इज ऑलरेडी देयर, हम रिजुविनेट कर रहे हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. बीइंग वाइस प्रेसिडेंट आई ट्राइड सिंस आई केम बैक इन 2008 साल से जो है वो 2 धड़ों में बटा हुआ था. पहले क्यू लीग के पास था, कासिम साहब के पास, अब एक नवीद साहब हैं पीटीए में. अभी कोई बनते नहीं है यहाँ पे, लेकिन हर बंदे को सीट चाहिए क्योंकि दौरे लगते हैं बाहर के. तो मैं इन चीजों में नहीं, क्योंकि आज आप सारे रिमोट पार्टिसिपेशन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अगर हम वहाँ मतलब मुझे नहीं समझ आता कि रेगुलेटर क्यों सोसाइटी हेड करना चाहता है. अदील मुझसे कहे तो मैं तो हैप्पी हूँ कि जी अदील साहब एकेडमिक हैं और वो इंडस्ट्री से बाहर हैं, थर्ड पार्टी है, ना उसका हार्डवेयर बिकता है ना उसका कोई पब्लिक
عدیل اگر اسلام آباد گروپ بنائے گا تو میں تو اس کو سپورٹ کروں گا, میں بھی فضان بھی سب آرام لوگ. ریگولیٹر کیسے ہو سکتا ہے کہ پالیسی بھی خود بنائے اور اس کو پھر کرٹیسزم, تو یہ تو وہی بات ہے کہ چٹ بھی میرا پٹ بھی میرا, تو وہی ہوگا, میری مرضی آئے گی تو میں آپ کو انٹرنیٹ یوز کرنے دوں گا, فیس بک یا نہیں دوں گا, یا نرس کی سائٹ. تو آپ لوگ یہاں پہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ آئی سی لاٹ آف پیپل آن سوشل میڈیا نیٹورک, اسٹوڈنٹس آر ویری کوئک. آپ لوگ سارے بڑے, اور جو آپ ایجپٹ وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں تو اس سے بڑی چیز آپ لوگ پاکستان میں لانے کی اس میں تیاری میں ہے. سو دیٹس وائی ریگولیٹر از آلسو ان کمپٹیشن ود یو. میں ویری ہیپی ود عدیل کہ آپ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ممبرشپ, اسی لیے میں آپ کو ممبرشپ ادھر ہی رائٹ اینڈ رائٹ دیر اپروو ہم آپ کو کریں گے. تو بی اے پارٹ گلوبل ممبر بنے تاکہ آپ فورمز میں جا سکیں رادر دین جو بڑے بزرگ جاتے ہیں ان کے علاوہ بھی آتے ہیں. اور میں صرف انٹرنیشنل فورم ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوں, میں نیشنلی اس مہینے میں تیسرا فورم کر رہا ہوں شہزاد. سو پلیز جب بھی آپ کو ضرورت ہو, میری والنٹری ورک دیٹ آئی ڈو آؤٹ آف مائی جاب اینڈ آئی ول ہیلپ یو آؤٹ. جوائن انٹرنیٹ سوسائٹیز آئی آلریڈی سیڈ ہمارے مشن کو سپورٹ کریں, بیکاز اف یو سپورٹ آور مشن اٹ ول سپورٹ یو. اور مدیہ نے مجھے خاص طور پہ کہا نرس کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ صرف انٹرنیٹ سوسائٹی تو پہلا اسٹیپ ہے, وچ از دی 0.5% آف دی انٹرنیٹ کنٹریبیوشن. اس کے بعد ڈپلو ہے, ڈپلومیٹس آپ کیسے بنتے ہیں, میں ڈپلومیٹ ہوں, ٹرین ڈیزائن ڈپلومیٹ. کیونکہ انٹرنیٹ گورننس ایشوز جو وارز ہوتی ہیں, پول ایشوز ہوتے ہیں, آئی ٹی یوز کے ایشوز ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں, فزیکل انفراسٹرکچر. آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ تو بہت بڑی نالج اکانومی. سو یو آر بورن ان نالج اکانومی, یو آر آل ڈیجیٹل نیٹیوز اینڈ اٹ از یور رائٹ ٹو ڈیزائن دی اکانومی دیٹ یو وانٹ. کیونکہ آپ ایگریکلچر اکانومی میں پیدا نہ ہوئے نہ انڈسٹریل اکانومی. سو نالج اکانومی از یور بیبی, ٹیک کیئر آف اٹ دا وے یو وانٹ. ٹھیک ہے, اچھی طرح سے کریں گے تو اچھا بنے گا, بری طرح سے کریں گے تو پرابلم ہوگا. ممبرشپ فارم از اویلیبل ود مائگریشن. مائگریٹ کرنے کا کچھ جواب دیے انہوں نے کہ وی آر ویری انٹرسٹیڈ بیکاز آئی پی وی, ہم ہی آئی پی وی فورس ڈو وی ہیڈ, کوئی بتایا تھا مجھے 4.2 بلین. آپ بتائیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ کوئی اور ان کے جواب دینا چاہیں ان کی جگہ پہ؟ آئی وڈ بی ہیپی ٹو ہیئر دا کوشچن. میں گڈی بیگ آپ کے لیے نکال رہا ہوں, جو صحیح سے جواب دے گا تو اس کو کچھ تو ملنا چاہیے. یہ کہتے ہیں جی 4.2 بلین تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا اس پہ کہتے ہیں؟ پریکٹیکلی تھی. ٹھیک ہے جناب, تو ایک قلم اگر ہم دے دیں آپ کی طرف سے تو یہ لے لیجیے آپ کے لیے. تو 4.2 تالیہ جی بھائی, وہ فری ہے ایز لائک انٹرنیٹ. تو جناب یہ ہو گیا 4.. اب مجھے کوئی یہ بتایا کہ آئی پی وی 6 میں کتنی آئی پی ہے جناب, جلدی جلدی بتائیں. فارمولا نہیں چاہیے مجھے, فارمولا تو مجھے بھی پتا ہے, اس کو پاور یہ بتائیے کتنی آئی پیز ہیں. آپ کے لیے قلم اور ریڈی ہے, بتائیے. ڈاکٹر صاحب آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں موبائل پہ؟ اچھا یہ دیکھیے غلط بات ہے, میں اس طرح کرتا نہیں. ڈاکٹر صاحب کو پین اس لیے ملے گا, اس کا بھی ایک ریزن ہے, وہ تک پہنچتے ہیں. آئی پی وی 6 جو بھی مجھے کیلکولیٹ کر کے بتائے گا تب پین اینڈ گفٹ از دیئر فور. ٹھیک ہے جی, ہاں 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 ٹھیک ہے جی, اٹس آلریڈی دیئر. 4.2 بلین آئی پی وی 4 تھی, اور آئی پی وی 6 کتنی ہے ہم نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے. 340 ٹریلین. آپ بتائیں جی, اینی ون گیس؟ جو نہیں جائے سو کو اس کو ہم کریں گے. کتنی ہوں گی؟ آپ ڈبل کرنا چاہتے ہیں ان کا؟ دیکھیں میں یوزر پرسپیکٹو اس لیے لے رہا ہوں کہ میں آپ کو بہت سارا ٹیکنیکل بتا دوں, لیکن آہستہ آہستہ کیونکہ زندگی ختم نہیں ہو رہی ہے, اب تو شروع ہو رہی ہے ہماری آپ کی ملاقات. جی جناب, ان کا کوئی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ڈبل ہو رہا ہے, لیکن یہ تو ایک اسٹینڈرڈ وہ پشاور والا جواب ہے نا, جی ہو رہا ہے. بٹ ہاؤ مچ یو وانٹ ٹو ڈبل اٹ, اور یو وانٹ ٹو ٹرپل اٹ, اور یو وانٹ ٹو 10 ٹائمز اٹ؟ Okay, it's in trillions. So I give, since it is the closest one, and I expect students to do more research and get some numbers. تالیہ ضرور ہونی چاہیے جی, اپریشیشن. تو 2 سوالات کے جواب تو ہم نے لے لیے جی. آئی پی وی 4 کتنی ہوتی ہے, آئی پی وی 6 کتنی ہوتی ہے. مجھے کوئی یہ بتایا کہ لاسٹ بیچ جو آئی پی وی 6 ہے, سوری آئی پی وی 4, وہ کب ایگزاسٹ ہوا تھا؟ جناب فیضان صاحب از رائٹ, فیبرری 2011. ہم ابھی ریزرو بیچ چلا ہے, فیضان کے لیے آپ انجوائے کر رہے ہیں, یا یو وانٹ می ٹو گیو یو ٹریڈیشنل پاکستانی پریزنٹیشن, لمبی لمبی سلائڈز اور فینسی سی جو آپ کے اوپر چلی جائے؟
आपका इंटरनेट है, यू डिसाइड. आई एम वेरी हेल्पफुल, थैंक यू लेडीज, यू हैव कम, सो इट्स जेंडर बैलेंस नाउ. मैं बल्कि कहने लगा था अजीज साहब को कि ये क्या है कि आईटी सेक्टर में जब जाते हैं बिजनेस में तो सारी खवातीन हंसती हैं, तो ये पढ़ाई के मामले में कहाँ है. तो IPv4 क्यों चाहिए जी, ये जवाब दिया था फैजान साहब ने कि फरवरी में भी अभी वी आर यूजिंग द रिजर्व पूल जिसको हम कहते हैं, यूजिंग दैट. तो अब एप्निक के पास हमारे पास एशिया रीजन के जो रजिस्ट्रेशन बहुत लिमिटेड है तो एग्जॉस्ट हो रहा है. So that means there is a very big opportunity coming for the academic and business to basically help migrate. आप लोग ये सोच रहे हैं कि नौकरी कैसे मिलेगी, तो नौकरी इधर है, और जो इदारों में प्रमोशन चाह रहे हैं वो प्रमोशन करें. और इसके लिए सबकी मदद करने के लिए अदील साहब और मैं बैठे हैं, वी विल हेल्प यू आउट हाउ टू माइग्रेट ऑन दिस, बिकॉज इट्स देयर. आप फिर पेनिट्रेशन देख लें 2005 to 2011 का, क्लियर है, विजिबल है आप लोग, जबरदस्त. अच्छा जी, ये ओरिजिनल हमारे एक्सपेक्टेशंस नजर आ रहा है. लाइटें बंद करवा दूं अगर आपने, इज इट क्लियर? ठीक है जनाब. तो ये हो गया हमारा रैपिड, अगर हम करते हैं और ये हो जाता है कंटिन्यूस करते हैं. कौन सा करना चाहिए, आप क्या कहते हैं, आवाम क्या कहते हैं, क्या आ रहा है? मैं और अदील साहब खामोश रहते हैं 2 मिनट के लिए. कितने लोग हैं वो चाहते हैं कि रैपिड माइग्रेशन हो? हाँ बताएं जरा. कोई भी नहीं चाहता रैपिड माइग्रेशन हो. कितने लोग चाहते हैं कि कंटिन्यूस हो, कि IPv4 भी चलता रहे और IPv6 पे भी माइग्रेशन हो जाए? सो दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी. मुझे HEC वालों ने टेक्नोलॉजी अभी बताई, तो मैंने कहा यार डू यू हैव एनी बिलियंस, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप पे देने के पैसे डाले पड़े हुए, तो सरकार का तो हर इदारा खड़ा हो जाएगा रूल स्टैक के लिए, यू डोंट हैव द मनी. एम आई राइट सर? लेकिन इसे यूजर वन, तो आई रिस्पेक्ट द यूजर कि आप दोनों चलाएं, पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, घर में 6 गाड़ियां भी खड़ी होती है एक बंदे के लिए, तो रूल स्टैक है. मैं टेक्निकल चीजों में नहीं जाऊंगा. ये थोड़ा सा आप देखिए कि कंटिन्यूस अगर हम एड्रेस शेयरिंग पे जाते हैं तो क्या होता है, और IP में माइग्रेशन फोकस पे क्या होता है. फैजान आप मेरी पढ़ना पसंद करेंगे? तो मैं पानी पीना पसंद करूंगा जनाब. It's already available on YouTube, और अगर आपका वेबसाइट अपना नस्ल हो तो इट विल ईजियर फॉर मी एज वेल टू गाइड द स्टूडेंट्स. और आप लोग सारे जो है जो रिसर्च सेंटर है उसमें सारा ये रिसोर्स बैंक बना दें. सो टनल इज ऑलरेडी देयर, रूल स्टैक का भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आई विल नॉट कीप इट वेरी टेक्निकली. कंटिन्यूस अगर करना है तो रूल स्टैक के हिसाब से जाना होगा. आई विल कीप माई प्रेजेंटेशन एज सेट स्ट्रेटेजिक एंड प्रिंसिपल. ये सारी ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल होती है. LSN पे आप लोगों ने काम किया हुआ है, NAT 64 624 R6 RD, ठीक है. ये सारी चीजें हैं, ये देखना इसी तरह होता है. ये सारा अभी वो डॉक्टर साहब बताएंगे. डू यू हैव अ फ्रेंड हियर? डॉक्टर साहब, may I leave this for you? अच्छा, he wrote doctor. He didn't wrote me. So my friend fellow speaker will cover it. तो इनके लिए थोड़ी सी तालियां एडवांस में दीजिए. My lord. मेथड ये है भैया, स्लाइड्स आप लोगों के पास ऑनलाइन अवेलेबल है, इंटरनेट पे सर्च मारेंगे माइग्रेशन IPv6 से मेरा नाम, तो ये स्लाइड्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा. तो पेपर में आ जाए अदील साहब पूछ ले तो यहाँ से इजीली एक्सेसिबल है. मसला ये हो गया है, पाकिस्तान वाला हाल हो गया, IP खत्म हो गई, ये लीव मांग रहे IP एड्रेस है. अच्छा, आपको बड़े मजे की बात बताऊं, जो ICANN की मीटिंग इस वक्त भी चल रही. कल भी आई वाज बिजी इन ICANN मीटिंग, एंड व्हेन आई गो फ्रॉम हियर आई विल अटेंड ICANN मीटिंग अगेन. आई हैड टू गो टू सिंगापुर बट आई प्रॉमिस्ड अदील सो आई वुड बी हियर, सो आई एम हियर, सो आई डिड नॉट ट्रैवल. एक तो IPv6 से माइग्रेट करेंगे, उससे GTLDs माइग्रेट होनी है, तो ये सारे इश्यूज आ जाएंगे. तो ये इश्यूज को आप अपॉर्चुनिटीज में लें कि यू हैव न्यू इन्वॉल्व. आपसे पहले लोग जो सिस्को के हेड हो गए थे, अब वापस से गेम इज अगेन बैक इनटू द फोर्थ. मार्केट शेयर चेंज होगा हार्डवेयर प्रोवाइडर्स का, सॉफ्टवेयर का, so you have an opportunity to become a market leader. ग्लोबल इंटरनेट, why we have multiple paths करने की इसलिए जरूरत है कि how things are changing, ठीक है जी. All the slides are available and I have a luxury, you don't have the luxury of the time. Need of IPv6 क्यों है, हमने शुरू में डिस्कस कर लिया, फिजान ने बताया, आप लोगों ने भी की IPv4 exhaust. Slides are just for the reference and discussion. This is where we are. If you look at it, IPv4 address runs out here. So, अगर आप टाइमलाइन देख लें तो हम क्रिटिकल मोड में चलेंगे. पाकिस्तान में वी आर नॉट रेडी, इवन एकेडमिक्स में हमें नहीं पता है कि कहाँ जा रहे हैं. सिर्फ मैंने नोटिस किया कि अदील को पता था, या किसी से पूछा तो भी उन्होंने कहा कि अदील को कहाँ जा रहे हैं.
Adil, it's a very good compliment कि everyone knows that you are doing something, so we look forward कि इसको जो है वो you will translate this into a national policy of have some kind of a strategy or a policy or a roadmap for Pakistan in terms of the migration. So round of applause for डॉक्टर साहब, because मैं तो उनको अभी से लीड दे रहा हूँ और सपोर्ट हमारा साथ रहेगा और हम सब मिलके इनका सपोर्ट करेंगे, because he is in the forum of community IT as well. तो ऐसा ना हो कि बैंड वैगन के पीछे हम भागे हैं, पता चले वो धुआं निकल रहा है, धुएं की खुशबू सुन के हम कह रही थी वैगन आई थी कभी, तो वैगन तो जा चुकी हूँ उसको. It's not Armageddon, it's not Y2K, but it's here. Let's take it. Solutions क्या है? हम IPv6 डे करते हैं. How many people, what is the, मुझे ये बताएं कि IPv6 डे हम कब मनाते हैं? हाँ? 8 जून. और कौन कह रहा था? आपने भी कहा 8 जून. और किसने कहा था? एक तुम्हारे लिए हो गया बेटा. डॉक्टर साहब ठीक है, ये गलत कह रहे हैं. और कितने लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? डबल पेन किसी को भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिनीवा से मंगवाना पड़ता है तो उस पर सरकार टैक्स लेती है हमसे पाकिस्तान पे. तो नथिंग इज फ्री, स्पेशली एजुकेशन इज टैक्स्ड इन दिस कंट्री. इट्स सपोज्ड टू बी फ्री. तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? कितने लोगों ने IPv6 डे में कोई एक्टिविटी की? मुझे बताना पसंद करेंगे आप? आपने किया था सर? क्या किया? सॉरी, अच्छा, एस हाँ, अच्छा टेस्ट में आपने, बट आई ओनली रेड 2 ऑफ देम, PTCL और साइबरनेट. लेकिन मुझे डॉक्टर अरशद ने भी ये बताया था. तो ये सर के लिए पेन इन्होंने एक मेहनत की, बल्कि मैं 2 देना चाहता हूँ ना, एक से गुजारा करें क्योंकि रिसोर्स से. तो नस्ट का मैं कह रहा था, बल्कि उसको उसमें डॉक्यूमेंट करवा दें IPv6 डे की वेबसाइट के ऊपर, बिकॉज देयर आर 2 ऑफ देम. और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, एवरी डे वी चेक द होस्ट. तो IPvMatrix.org अगर आप देखेंगे तो कल पाकिस्तान 0.56 पे था, आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.59 पे होगा. दिस इज अ वेरी पुअर नंबर, नॉट इवन 1%. सो आप लोग थोड़ा सा इस पर फोकस करें माइग्रेशन की तरफ, एंड स्टार्ट मोबिलाइजिंग द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. मैंने HEC से यही बात आज की कि कब तक आप लोग एकेडमिक्स को IPv6 पे. उन्होंने कहा हमने तो कर दिया ना. तो मैंने कहा क्या कर दिया? उन्होंने कहा जी हमने कराची ऑफिस को रूल स्टार्ट कर दिया. तो मैंने कहा व्हाट अबाउट द यूनिवर्सिटीज? तो वही जवाब था कि अदील कर रहा है ना. तो अब अदील सब कुछ कर रहा है तो हमें साथ देना है अदील का, क्योंकि अदील जो है वो सब कर रहा है. तो अदील कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं. तो इट इज गुड कि नस्ट कुछ कर रहा है. आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर एंड लर्न कि नस्ट को IPv6 के बारे में मतलब, आई एम इंटरेक्टिंग विद अदर यूनिवर्सिटीज एंड स्टूडेंट्स एज वेल. सो यू पीपल आर वर्किंग ऑन द सॉल्यूशन, सो यू अंडरस्टैंड द इश्यूज. IPv6 में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सिस्को आपको सबसे बड़ा उसका नेटवर्क है, फेसबुक, गूगल एंड ऑल दैट. वी आर टेस्टिंग एवरी डे. तो आप लोग जब चाहें इसका पार्ट है, आपके पास टेस्ट बेड भी मुझे डॉक्टर अरशद ने भी दिखाई थी, एंड यू हैव वन ऑफ द ग्रेट प्रोफेसर, और इन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे दिखाया सिस्को PTCL का. सो टेस्ट करें और लेट्स बी अ पार्ट ऑफ इट. 530 कंपनीज ने अभी तक वर्ल्ड वाइड टेस्ट किया. यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड हैव अ लुक एट इट. सो यू विल फाइंड ऑल रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल टू डाउनलोड टू रीड मोर ऑन द सब्जेक्ट. ये सारा जो है टेक्निकल बात है. मैं सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ. डॉक्टर साहब आप जो है उसका टेक्निकल पार्ट, बिकॉज CCNA एंड ऑल दैट. एम आई राइट सर? ये डूल स्टैक है. मैंने ये इसलिए स्लाइड है कि कभी आप जिंदगी में मेरा नाम याद रहे तो डॉक्टर साहब का नाम याद रहे. तो आप ये देख लीजिएगा, ये ना कहें कि जी आपने बताया नहीं. ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा. बाय द वे आई एम नॉट अ टेक, आई नो हाउ टू मैनेज टूल्स एंड टेक्निक्स. ये बहुत ही टेक्निकल काम है और मैंने प्रिंसिपली डॉक्टर साहब को अपनी जबान दी है कि मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है डायग्राम. और बाकी टेक्निकल बातें जो आपने पूछनी है उसके लिए हमारे दोस्त मौजूद हैं. इसका स्पीकर विल गाइड यू ऑन समथिंग, किस तरह फ्लो होगा, कैसे चलेगा. और लेक्चर्स पहले के भी हैं टनल पे जो काशिफ साहब का है, जो सब कुछ बैठे हैं. तो कभी आप मुस्तकबिल में आगे इस पर डिस्कशन करना चाहें फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, दैट परहैप्स यू थिंक दैट यू are reviewing it and you need to make sure that you need some help, and how do we go to IPv4 में किस तरह से इंडस्ट्री 6 में क्यों है, प्रोटोकॉल क्या होगा. आई एम मेकिंग ए प्रोडक्ट, एप्पल की प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, स्मार्टफोन्स की, एंड्रॉइड की. तो इशू क्या आएगा तो आई विल बी एबल टू गाइड यू मोर ऑन द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल लैंग्वेज, इज परहैप्स द पॉलिसी एंड द गवर्नेंस इशू. द प्रोडक्ट विल end up where in terms of the market indicators. This is summary. I've done it. It's a hard, painful job. It will help you when you go for an interview or in an organization or business. They will ask you things like that. Even we do.
So look at it, what kind of platforms it will help you out when you are migrating itself. Adil will bail me out if something is left. Adil sir, you will please add. This is an internationally what we are advocating. This is how it should be. And you can look at it as a summary. Perspective and user. These are some of the questions. What is your focus? आपका क्या focus? अब हम focus को पाकिस्तान रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं? So we keep two variables. पाकिस्तान या ग्लोबली क्या हो रहा है? तो what is your focus? आप क्या चाहते हैं कि रैपिड IPv6 होनी चाहिए? जी प्लीज आप लोग कोई बताइए. क्या होना चाहिए? या कंटिन्यूस होनी चाहिए? नेटवर्क्स के लिए क्या होना चाहिए? डुअल स्टैक होना चाहिए, विच वी ऑल हैव सीन. मैंने इसमें डुअल स्टैक का भी आपको आगे काफी मजे का बताया. मैं आपको थोड़ा सा वीडियो भी दिखाऊंगा. यूजली आई शो द वीडियो इन द फर्स्ट ताकि आप लोग सेंसिटाइज हो जाए, लेकिन आई डिसाइडेड कमिंग हियर नाइस पीपल. जो नैट कितने लोगों को पता है? व्हाट इज नैट? जी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. सर आई नहीं गेट योर पॉइंट सर. नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. डॉक्टर साहब ये सही फरमा रहे हैं. आइए आप इसे कलम दे लें, मेरा काफी भाग. तालियां भाई के लिए. आप कौन से स्टूडेंट हैं? अपना नाम भी बता दें. बहुत सारी तालियां. अच्छा जी, पोर्ट रेंज एलोकेशन किसी को पता है जी? पता है? लॉगिंग पॉलिसी. चलिए यार मुझे ये बता दें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टोटल कितने लोगों ने टेस्ट किया है IPv6? सॉरी, IPv डे पे कितने लोगों ने टेस्ट किया था और पाकिस्तान से कितने लोगों ने टेस्ट किया था? दो सवाल अलग अलग हैं. IPv6 डे पे तो नहीं है, वो हमने 12 लिए कि है हमारे पास IPv6, तो हमने टनल ब्रोकर के थ्रू जो है वो टनल बना के चला के तो IPv6 अपने Did you got what kind of result did you get? आपको रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये था कि वेबसाइट्स जो है वो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स खुल नहीं रही, तो वो आपने पाकिस्तान स्पेसिफिक की थी या क्या? कौन कौन सी वेबसाइट आपने ट्राई की थी? जैसे गूगल खोल रहा था. हाँ. और एक दो और खोल रहा था, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी थी जो बड़ी. बताए ना कौन सी वेबसाइट? मेरा ख्याल है शायद नहीं खोल रही थी या याहू नहीं खोल रहा था. अच्छा, याहू तो टेस्टिंग पे था. भारत को एक दो. आप इसका हमें डेटा जरूर शेयर कीजिएगा. It would be good we in a cup of tea, so do share it with us. उसके बाद जो है ना वो हमने ये फील किया कि अगर हम किसी सब्सक्राइबर को IPv6 का, पहली बात तो ये कि आपके जो जिनके साथ आप पीयरिंग करते हैं अपस्ट्रीम प्रोवाइडर्स, वो आपके साथ V6 पे पीयर बनाते हैं. तो अगर आप टनल भी किसी के जरिए बनाएं और टनल के जरिए आप चलाएं और सब्सक्राइबर्स को दें V6, तो तब भी वो अपने मदद इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकेगा जिस तरह से वो करते हैं. और स्पेशली पाकिस्तानी वेबसाइट तो खुलती नहीं है. पाकिस्तानी वेबसाइट से खासी इशू अभी तक. तो how many people do you know जो CCTLD हमारा है .pk वो कहाँ है? इसके पास कौन ऑन करते हैं? अच्छा साहब ये नस्वाल है. आपको PKNIC की बात करें. हाँ हाँ, PKNIC .pk किसके पास? कहाँ है? सर्वर का है? वो तो मैनेजमेंट का है, सर्वर का है? USA में है. तो हमें तो पॉलिसी नहीं बनाई हुई कि डेटा बाहर नहीं देना है. जानिए जनाब, इनके लिए ये बड़े माशाल्लाह सरकारी लोग हैं. हर चीज की पॉलिसी है लेकिन चीज पहले ही बाहर है. मिरर सर्वर है यार. और मजे की बात है, वो भी बैठ जाता है तो यूजली US सर्वर से बैकअप लेते हैं. आई एम कीपिंग यू ऑफ रिकॉर्ड. PTA असल में बिजी है दूसरी चीजों में. वो सियासत करना चाहता है, सोसाइटियां बनाना चाहता है, तो वो E-क्राइम आपका 2007 में एक्सपायर हुआ है. SMS कितने खतरनाक लोग है कि कोई स्टूडेंट जो SMS या फेसबुक पे कोई चीज लिखे तो सजाए मौत का वो क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं. वैसे शायद पाकिस्तान ही मेरे ख्याल से वो वाहिद शायद मुल्क हो जिसके और अथॉरिटी है ही पाकिस्तान. हाँ, मेरे लिए तालियां बजाएं. मैंने आपको यह बताया पाकिस्तान में कि आप अपना इंटरनेट जो है वो, और आपके प्रोफेसर पिछली बार मुझे मिले थे तो वो कह रहे थे अमेरिका. मैंने कहा भाई पहले अपने आप पे ले आओ चीजें, इधर नस्क में लगा दें. नस्क कैन ऑल्सो आई एम वेरी मच क्लियर कि पाकिस्तान में अच्छी इंटरनेट सोसाइटी हो या हो ना, तो हम PKNIC की जितनी आमदनी है ना उससे सारी एकेडमिक HEC की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इतना पैसा हमें मिलेगा. लेकिन अनफॉर्चुनेट है हमारे पास जिस पर असल में इसकी कोशिशें पहले हुई नहीं है, लेकिन आई डोंट नो वो मैनेजमेंट चेंज होती है तो लग जाती है. बस ये गवर्नमेंट और मैनेजमेंट ही चेंज होती है, बाकी बंदा वही रहता है. लेट्स वर्क टुगेदर. बिकॉज वही वाली बात है कि वी डोंट हैव अ स्ट्रांग सोसाइटी.
ایکیڈمکس اگر ہم ہیں تو اس کی لمیٹیشن ہے بزنس کی. تو لیٹس ورک آن سوسائٹی اور لارجر پرسپیکٹو. میں نے آپ کو بتایا تھا 530 ویب سائٹس جو تھیں جنہوں نے ٹیسٹ کیا تھا. تھوڑا سا غور سے سنیں, پاکستان میں کون سے 2 لوگ تھے جنہوں نے ٹیسٹ کیا تھا اور ایک اکیڈمک انسٹیٹیوشن؟ پلیز. ہاں آپ کو تو مل چکے نا. ہاں جناب جناب یہ کل ہم آپ کو کام ہے کیا آپ کو بہتر مستقبل بنا. آپ کو آنا پڑے گا, میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف دوں گا. تالیاں جناب, ان کے لیے تالیاں بہت ہی سستی ہیں, اسکول میں تو مفت ہیں اور 500 روپیہ دیں تو جلسہ کریں نا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں واپس ہم کر رہے ہیں کہ جی ڈسٹریبیوشن ٹو ایج کیسے ہوگا, نیٹ, اور یہ سارے سوالات سے میں توقع کرتا ہوں یا کر سکتا ہوں کہ یوزر پرسپیکٹو ہے آپ کی طرف سے آنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب اینڈ یوزر پرسپیکٹو اور بھی لیں گے. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو, مطلب میں آپ کو ساتھ مل کے آئی ٹرائنگ ٹو شیئر دیٹ پرہیپس دیز آر سم آف دی تھنگز دیٹ یو نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ. دس از انوالوز لاٹ آف کاسٹ اینڈ ریسورسز. ایک بات مان لیں, IPv6 از ہیئر ٹوڈے. آج آپ کو پتہ چل گیا کہ IPv4 جو آپ کام کر رہے ہیں تو it's an opportunity for you to migrate. To migrate you need to learn and become a part of an institution which has ایگزاسٹ ہو گئے ہم 2012 تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مدد کی, اور علی صاحب اور ماشاء اللہ اور پروفیسر اور اسٹوڈنٹ اور ہم سب مل کے انشاءاللہ پاکستان کو اس ارینا اور ایریا میں لے جائیں گے. بی کیئرفل اباؤٹ دا وینڈر سپورٹ, کیونکہ آج میں بہت سارے وینڈر سے مل کے آئے ہیں, ہواوے اینڈ آل دیٹ. تو دیٹ وڈ بی کہ وہ اپنا ایک سپلائی ڈریون کر دیں گے, ہارڈ ویئر منگوا لیں گے. ڈاکٹر صاحب اور باقی دوست ہمارے فیلو اسپیکر ول اگری وتھ می کہ وہ ایک ہارڈ ویئر منگوا لیں گے جو سب سے سستا اور مناسب ہوگا ہمارے لیے, اور وہ ڈپلوائے ہو جائے گا. تو اس کے لیے ذرا احتیاط کرنا ہوگا, بیکاز اٹ از دا فیوچر دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, ان دا فیوچر دیٹ آر نیکسٹ جنریشن لیڈرز ول یوز. تو پوچھے سپورٹ کے ریئلی سپورٹ کا مطلب کیا ہے, اور جب وہ سپورٹ کا مطلب بتایا تو ڈاکٹر صاحب اور مجھے سے کچھ تھوڑے بہت جن کو کوشش ہم کر رہے ہیں ان سے سیکھیں, ان کی کتابیں پڑھیں, اور تاکہ پتہ چلے کہ وہ ریئل سپورٹ ہے یا تو ایسے ہی. سیکیورٹی ایشو ہے بہت بڑی چیز ہے, اس پہ آج ہم ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک سیشن الگ سے کروائیں. کچھ دن پہلے میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی, میں یورپین یونین نے مجھے $3.5 لاکھ دیا تھا IT سیکیورٹی میں پاکستان سے, اور مجھے 10 بندے بھی نہیں ملے. لیکن اب میں نسٹ میں آ کے بہت خوش ہوں. آئی ہیو ریکویسٹڈ یورپین یونین اگین, برسلز میں میری بات ہوئی ہے, اینڈ اگین آئی ول میک شیور کہ پیسہ واپس پاکستان کے لیے سیکنڈ بیچ میں آئے, دعا کیجیے گا. تو آپ لوگوں کو ہم یورپین یونین بھیج کے اور ان کی کنٹریز میں IT سیکورٹی کیا ہوتی ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں روز پرابلم ہو رہا ہے. پرسوں سیگا ہیک ہو گئی, اس سے پہلے سونی ہیک ہو گئی, IMF ہیک ہو گئی ہے. تو وہ ہیکنگ اٹس ناٹ اے ٹریڈیشنل ہیکنگ, اٹس ملین بلینز آف ڈالرز آف انڈسٹری دیٹ ہیز, کیونکہ سارا ڈیٹا جو IMF کا ہے وہ چلا گیا ہے. پاکستان سے ملک کے بارے میں سب کو ہر چیز پتہ چل سکتی ہے. سونی کا تو یوزر بیس ڈیٹا ہے, لیکن اس کے پیچھے کافی کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ہے. سو سیکورٹی ایشوز کے بارے میں دیکھیں میری, اور ہمارے ملک میں ہر چیز سیکورٹی. میں ابھی گاڑی لے کے آ رہا تھا, انہوں نے کہا سیکورٹی ایجنٹ وہ لوگ جلسہ کر پارلیمنٹ کے کام. تو ہمارے یہاں تو ہر چیز سیکورٹی ایشو بنا دی جاتی ہے. سو سیکورٹی از اے بگ ایریا وی نیڈ ٹو ڈسکس اینڈ ہاؤ اٹ کین بی. اگر اخلاقی طور پہ مجھے 5 منٹ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میرا پریزنٹیشن ٹیکنیکلی ختم ہو گئی, ویڈیو ہے. سپلیمنٹری ریڈنگ آپ دیکھیں, میرا پیپر مائگریشن والا پڑھ لیجیے کہ 2 جنوری میں نے ایشیا ریجن کی مائگریشن میں پاکستان کا بیسٹ کیس پریزنٹ کیا تھا. اگر آپ اس کو لکھیں گے پاکستان اور IPv6 یو ول ہیو دیٹ پیپر ان دی پریزنٹیشن. ٹھیک ہے, دیٹ ول آلسو ہیلپ یو آؤٹ کہ پاکستان کہاں تھا, IPv ریڈی کس طرح سے ہوا, ڈاکٹر صاحب نے اور اداروں نے لوگوں نے کس طرح سے محنت کی اور کہاں تک پہنچے, وچ از این ایشیا پیپر وچ ہیز بین یوزڈ, اور کچھ گورنمنٹ اس کو فالو بھی کر رہی ہے. تو میں نے اس پہ کام کیا ہے, تو آپ لوگ پلیز کو دیکھیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب سے اور جو فیکلٹی ممبر ہے, یو کین یوز دس پیپر ایز این اکیڈمک ریسرچ, اور اس پہ آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں, پڑھا بھی سکتے ہیں. اینڈ آئی گیو یو فل رائٹس ٹو یوز دیٹ پیپر ٹو بلڈ آن. ٹھیک ہے جی. اسٹیٹ آف انٹرنیٹ 2010 آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں ڈیٹا ہے پورا ہاؤ اٹ ورکس. دس ول ہیلپ یو آؤٹ. ٹریبیون میں بھی یہ چھپا ہوا ہے, ڈان میں بھی چھپا ہے. نیو انٹرنیٹ گورننس فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. لوگ یہاں پہ پاکستان میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اکانومی بہت ہے, UN آرگنائزیشن, فارن ڈونرز, NGOs, NGOs in Islamabad. So you can go for that as well. Government also is interested in sustainable development, business as well. یہ تو 2-3 ہیں جو میں نے اس سے ریلیونٹ ہے. You have lots of people that have written e-governance کے اوپر ہے اور others will follow that one as well. کوشچن آنسر میرا تھا کہ IPv6 کے ریسورسز کا, میرا پریزنٹیشن ادھر ختم ہو جاتا ہے ٹیکنیکلی. ڈاکٹر صاحب سے رات کی بات ہوئی تھی, تو مجھے آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا ریسورسز ہیں اور ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی. تو مجھے اگر کوئی بتانا پسند کرے تو میں اس کی ساتھ
काम करने के लिए लगे। जी मैं पूछता हूँ, डू यू लाइक टू ऐड, क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास? इंडिविजुअल तौर पे एफर्ट्स हो रही है, वुड यू लाइक टू स्पेसिफाई एनी एफर्ट दैट इज टेकिंग प्लेस? राइट एक है 10 में काम किया यूजर पर्सपेक्टिव, जैसे कि हम रिसेंटली इमरान साहब के अच्छे ने IPv6 हॉटस्पॉट्स इंस्टॉल किए, राइट राइट और हम वेबसाइट्स और हमारे सर्वर पे फिक्स कर दिए। इंडस्ट्री पार्टी से हमें ये पता चला कि फिर आप गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा काम नहीं हो रहा, जिससे यूज किसी केस किया जाए। और आप तवक्को करते हैं कि होना चाहिए जैसे होना रिक्वायरमेंट? चाहिए, क्योंकि जो मेरे रोड मैप देखे मलेशिया का ज़्यादा पुराना नहीं है, राइट सर, उन्होंने एक नेशनल रोड मैप किया और आपके जो एजुकेशन और रिसर्च नेटवर्क को टोटली आपका वेबसाइट डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत तालियां। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया था रिसोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट्स। और मलेशिया की भी बात करें, मलेशिया के जो हमारा इंटरनेट सोसाइटी का जो हेड है लड़का, इज ओनली 21 years old, पानी उसका नाम है, मेट्रो में श्रीलंका लास्ट couple of weeks back। और आप सोचिए मलेशिया इज वन ऑफ द लीडिंग हांगकांग और उसके साथ कम्पीट कर रहा है। एंड कल मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, लीगली और नॉट ओबलाइज्ड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बट दे आर लाइक एवरेज 14 to 16 years, और वो एथनिक को बता रहे कि कैसे इंटरनेट उनका होना चाहिए। तो सबसे बड़ा बंदा जो उनके ग्रुप में है जो रिप्रेजेंट करता है वो 19 या 20 years से 20 भी नहीं है मेरे ख्याल में। तो आप सोच लें कि हमें उनकी सुननी पड़ती है, बिकॉज दे आर डिजिटल नेटिव्स। और बखुदा है कि ये 12 साल वाला छोड़ें, अब जो मिलेनियम्स आ रहे हैं ना, आप तो डिजिटल नेटिव्स हैं बहुत सारे, डिजिटल नेटिव्स जो 1980 के बाद पैदा हुए। तो हम डॉक्टर साहब और हम थोड़े पुराने, खैर मैं बराबर ही हूँ, मैं भी डिजिटल नेटिव ही हूँ ऑलमोस्ट। तो हाँ, आई वॉज बॉर्न इन डिजिटल एरा, बिकॉज पाकिस्तान मैं तो जब वहाँ डिजिटल में आई वॉज बॉर्न इन डिजिटल एरा, मैंने स्टार्ट की थी कंप्यूटर बहुत पहले। सो इट बिकेम माई पैशन एंड प्रोफेशन। मिलेनियम्स आपको बहुत कंपटीशन देंगे, जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए, दे आर वेरी फास्ट। उनका तो एंड्रॉयड और स्मार्टफोन पे इतना कमांड है जितना डिजिटल नेटिव का मोबाइल फोन पे। और हम हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनका रिमोट्स पे हैं, अब पाकिस्तान रिमोट सोसाइटी है ना, जियो टीवी एंड IC, जो बाहर के लोग हैं वो मोबाइल फोन, आईफोन, आईपैडल्स, ठीक है ना। आप उनसे बात करनी तो आईपॉड बनाना पड़ता है, कास्ट बनाना पड़ता है, ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, यूट्यूब करना पड़ता है। मिलेनियम्स तो इतने फास्ट हैं कि वो खुद डिक्टेट करते हैं कि उनको चाहिए क्या। तो अभी तो हम वेब 3 पे काम यहाँ पे हो रहा है, हम वेब 8 पे काम कर रहे हैं, वेब 10 आपके लिए इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। आप लोग जो अर्थ बेस्ड इंटरनेट कर रहे हैं, जो लोग एडवांस स्टडीज करना चाहते हैं अदर देन यूनिवर्सिटी, वो IPNs पे काम करें, जो नेटवर्क बेसिकली कुरान में भी जिक्र है, यूनिवर्स इसमें कनेक्टेड। अभी तो इंटरनेट बाहर ही जा सकते हैं ना दुनिया से। तो मैं थोड़ी बहुत इस तरह के विंसर्फ के साथ हेल्प करता हूँ। मेरे इत्तेफाक है, मुझे इजाज़त हासिल है, मैं बिल गेट्स से भी मिला हूँ। सबसे इंटरनेट गवर्नेंस ऑफिस में होता ही है, ये सारे मौजूद लोग आते हैं फोरम में, दुनिया के लीडर्स और बिजनेस और ऑल दैट। सो मुझे बहुत इजाज़त है, इसमें अल्लाह ताला का करम है, मेरी कोई इसमें वो नहीं, मैंने तो कोशिश की है ज़िंदगी में, मैं हैव रीच्ड हियर। ताकि मैं चीफ टेक्निकल एडवाइजर हूँ, इंटरनेट गवर्नेंस ऑफिस सेटअप किया है, आप लोगों की खिदमत में आया हूँ। आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, मैं आज आप लोगों से सीखने आया हूँ ताकि मेरा भी नॉलेज ज़्यादा बढ़े। तो डॉक्टर साहब ने बहुत प्यारी बात की, रिसोर्स की जरूरत है, क्योंकि हम सब एक रिसोर्स हैं। तो एकेडमिक जो है, मैंने थोड़ा सा फैंसी बनाता चार्ट आपके लिए, लेकिन आई डिडंट वांट इट, तो आई केप्ट इट मैनुअली। तो जो गौर से सुनेगा वो याद रखेगा, वी विल कम अ पार्ट ग्राफिक हम बाद में डाल देंगे इसलिए। एकेडमिक जो है वो आपको ह्यूमन रिसोर्स दे रहा है, स्टाफ है, फैकल्टी है, जो आपको बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, जिसको डॉक्टर साहब ने एग्जाम्पल भी बताया कि हम यूज कर रहे हैं। आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग्स। आई एम हैप्पी टू अनाउंस टुडे हियर, एपनिक से मेरी कल भी बात हुई है, हम जुलाई में और एंड ऑफ द 4th quarter इन पाकिस्तान एपनिक को पाकिस्तान बुलाएंगे। एपनिक पता है जो IP इशू करता है, आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट एपनिक से ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन कराएंगे। आप अगर आप ISOC के मेंबर है नंबर 1 वैसे, और इसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि मेंबर बने तो ही होगा, नहीं जी, आपके लिए है, आप ना भी बने बी अ पार्ट, लेकिन बनने से ज्यादा फायदे होते हैं, ठीक है जी। तो ये एक हमारी तरफ से आपको तोहफा होगा जो आपको हेल्प करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। सपोर्ट हम ये आपको दे रहे हैं कि एजुकेशन देंगे और बताएंगे कि हाउ यू कैन गेन इन दी नॉलेज। बिजनेस से लोग कम हैं, लेकिन सरकार के कुछ लोग हैं जो बिजनेस सरकार का देख रहे हैं, उनके पास पैसे बहुत हैं, रिसोर्सेज। रिक्वायरमेंट उनकी ये कि उनको सोल्यूशंस और प्रोडक्ट्स मिल लीजिए। मैं भूल गया प्रधान बिजनेस में, तो
फैजान पैसा है, तो फैजान के पास पैसा है, तो फैजान के पास प्रोजेक्ट हैं सिंगापुर से, स्विट्जरलैंड से, तो इसको सोल्यूशन और प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो कि डॉक्टर साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है जी, तो इनको हेल्प करें. हम क्या कर सकते हैं, और मैं स्पेसिफिक आईसॉक की बात नहीं करता हूँ, इंटरनेट सोसाइटी की मैं डिप्लो को भी देखता हूँ 3-4 तरह, इट्स माई वॉलेटरी वर्क. हम कोशिश करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि किस तरह से बेहतर सोल्यूशन और प्रोडक्ट कौन बना सकता है. HR का मैंने जिक्र किया, मुझे पता चलिए नस्ल की खातून है अहमदिया, हम उसको वहाँ भेज रहे हैं, तो इट्स ह्यूमन रिसोर्स दैट इज अवेलेबल, आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल जाती हैं, बिजनेस को ये फायदा है, ठीक है. तो बिजनेस को चाहिए, मेरी आज की बात सुबह ये हुई है कि दे शुड इन्वेस्ट मोर इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू हैव मोर सोल्यूशन एंड प्रोडक्ट. डॉक्टर साहब ने अच्छा काम किया, सिस्को की लैब्स बनाई, नेक्स्ट आई एम वेरी हैप्पी टू सी द लैब्स ऑफ डिफरेंट corporate sponsored to test, so business will pay, and I will have more meetings with after academics with businesses to invest more in academics, so you can be a part of a more broader world. सिविल सोसाइटी हमारे यहाँ बहुत पुअर है, जो कि पॉलिसी में हेल्प कर सकती है, इसीलिए हम कह रहे हैं रेगुलेटर को तो मजे लगे हुए, कोई सिविल सोसाइटी ही नहीं है. आपको पता है कोई है नहीं. कैमरा के सामने तो फिर भी टीवी वाले खड़े हो जाते हैं, उन्होंने मीर साहब ने 2 अपनी एनजीओ बनाई हुई है, तो 4 किसी ने बनाई. यहाँ सिर्फ अगर सिविल सोसाइटी है तो वो औरतों के लिए बनी हुई, उनके लिए जो बड़ी बेशर्मी की बात है कि वो उनके इश्यूज की मार्केटिंग कर रहे होते हैं. इस्लामी मुल्क में जो है वो इस तरह के इश्यूज होने नहीं चाहिए, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के, शरीयत वाला मुल्क है. इश्यूज तो हमारे पास सिविल सोसाइटी को नहीं, नॉलेज इकोनॉमी में जा रहे हैं, whenever I meet there are issues of women and children protection, which is quite, मतलब इतनी एनजीओ हैं जो औरतों बच्चों पे काम कर रही है, लेकिन कोई इंटरनेट की प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा है. एवरीवन इज यूजिंग मोबाइल फोन. मैं पूछता हूँ कि जी आपका बच्चा मोबाइल फोन यूज करते हुए SMS गलती से फॉरवर्ड कर दे कि जी सदर पाकिस्तान के हवाले से, तो वो तो ट्रीजन में आ जाएगा. और दुनिया में इस वक्त हमें 6000 लोग पकड़े हैं, वो जो विद द हेल्प ऑफ इंटरपोल एंड ऑल दिया था, वो जो चिल्ड्रंस को अब्यूज कर रहे थे. और अभी स्पार्क की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में किस तरह बच्चे अब्यूज हो रहे हैं इंटरनेट के जरिए, और कोई इस पे काम ही नहीं, कोई सिविल सोसाइटी ही नहीं है. अगर कोई इदारा काम करता है तो मुझे बताएं. फैजान नहीं, आप में से कोई है? कोई एनजीओ ही नहीं है. कितनी बड़ी मार्केट है यार, फंड भी है, सब चीज है, लेकिन काम नहीं है. तो पॉलिसी नहीं बन रही. मैंने कहा ना, वो रेगुलेटर कहता है कि मैं ही सिविल सोसाइटी बना लेता हूँ, मैं इंटरनेट सोसाइटी इस्लामाबाद चैप्टर बना लेता हूँ, क्योंकि मैं जनाब PTA हूँ ना, मैं पॉलिसी भी बनाऊंगा, हफ्ते में थोड़ी देर बाद दूसरा बैठ जाऊंगा, मैं कहूँगा ये पॉलिसी ठीक है, इसमें फंडिंग देता हूँ, रिसर्च करते हैं, तो मैं इधर आ जाऊंगा. So this will not work. Changing caps does not mean. Regulator एक हो, civil society अपनी तरफ हो, business अपना हो, multi stakeholder approach हो, and we should work together and make a better internet society. ठीक है जी. आपके पास कोई डोनर है, एस्टैब्लिशमेंट नस्ट कोई फैसिलिटी है कि डिफेंस के साथ काफी अच्छा आप लोग काम करते हैं, उसके ऊपर आप लोग देखें. वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करता हूँ पब्लिक डोमेन में, बिकॉज इट्स क्वाइट ऑफ अ थिंग, बट वी आर एन न्यूक्लियर पावर स्टेट, और इंटरनेट उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. मेरे पास काफी लोग रिक्वेस्ट करते हैं, CERN में आते हैं. CERN आपको पता दुनिया की आप सबका है. आई फ्रॉम माई ऑफिस गिव्स द अप्रूवल टू गो टू द रिसर्च लैब्स. आप लोग जहाँ काम करते हैं, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आते हैं, तो आप लोग प्लीज अगर उस एरिया में भी जाना चाहते हैं, वी आर ओपन. मैं मेंबर हूँ ICANN का, हाई सिक्योरिटी TLDs का और ZTLDs का. अब तो कोई ML के डोमेन पे काम ही नहीं करता है, तो आप लोग अगर कोई इस तरह के उसमें जाना चाहते हैं तो प्लीज सिक्योरिटी, IT सिक्योरिटी, प्राइवेसी, वॉरफेयर्स, इस तरह की चीजें. बिकॉज इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीजें होती है. इट्स नॉट डिस्कशन टॉपिक हियर, इट इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक. लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट, डिफेंस और इन चीजों पे काफी रिसर्च करता है, सीन लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. तो प्लीज डू कम एंड वी हैव इट. गवर्नमेंट के जो लोग बैठे हैं यार, पब्लिक पॉलिसी की जरूरत है हमें काम करने की. वी हैव ऑल द रिसोर्सेज, नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं. लेट्स मेक श्योर दैट वी वर्क इट आउट और रोड मैप बनाते हैं. मैं इस फोरम से ये उम्मीद करता हूँ कि वी हैव अ पाकिस्तान रोड मैप. सो आप सब हमें मिलें और हम डॉक्टर अदील का इस पे सपोर्ट लेंगे. थैंक यू वेरी मच. ये मेरा नाम है आसिफ कबानी, फेसबुक, ट्विटर, एनीवे यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. रेफरेंस रीडिंग मटेरियल मैंने सारा रख दिया है, कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहे या इस तरह से. तो मेरे पार्ट पे ये खत्म है. क्वेश्चन आंसर सेशन हम करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ ताकि एक रिफ्रेश रिव्यू भी हो जाएगा. एंड मैं अपने फेलो स्पीकर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने टाइम में से 10-1 मिनट दिया. अल्लाह उनको इसका सवाब दे. To work, all entities must use the same IP protocol. However, if one migrates to IPv6 before the others, the communication chain is broken. Who will suffer from IPv4 exhaustion? First, there are the service providers. However, they knew this was coming and have been looking at solutions for several years. Next are the enterprises and content providers. Today, very few websites offer IPv6 services, but this is changing, especially with high-profile events such as World IPv6 Day. Regarding consumer devices, there has been a lot of progress.
Many operating systems today already support IPv6. However, older operating systems do not and will still access the internet. So service providers and enterprises have to offer services to both IPv4 and IPv6 clients, requiring coexistence between the two protocols for a long time. So is there a solution to seamlessly migrate to IPv6? First and foremost, no one solution fits all. So stay with us as we describe the different solutions for the different markets. Let's talk now about the IPv6 migration paths for the service providers. Internet service providers and mobile network operators have two main challenges. Their first challenge is IPv4 exhaustion, as service providers have more and more subscribers every week with a limited number of public IPv4 addresses available. Their second challenge is access to IPv6 content. Service providers are in a very competitive market, and being the first to deliver IPv6 content is a competitive advantage. So what are solutions to the IPv4 exhaustion challenge? The primary solution is a specific type of NAT called large-scale NAT, also known as carrier-grade NAT. Large-scale NAT, LSN, offers fairness with guaranteed NAT resources to end users via user quotas, and transparency with minimum to no impact on most applications, including P2P applications. That said, large-scale NAT still requires techniques called ALGs to be transparent for some applications such as FTP or PPTP. So what are the techniques using large-scale NAT? There is NAT4.4, which has strong interest by mobile network operators with deployments already underway. There is also NAT4.4.4, which has strong interest by internet service provider with deployments under the way too. However, these techniques don't provide any solutions to access IPv6 content. So service providers deploy these as temporary techniques to alleviate the IPv4 exhaustion issue and will move to other techniques when ready. The last technique, which leverages large-scale NAT, is called Dual Stack Lite or DS Lite, which has some interest by internet service providers. DS Lite has the advantage of resolving IPv4 exhaustion and offering access to IPv6 content at the same time. So what are the solutions to access IPv6 content? There are two main techniques and a new one emerging. The first technique is dual stack with IP4 and IPv6 support end-to-end. This solution receives some interest by internet service providers but lacks wider adoption due to cost. There is the cost of infrastructure plus license upgrade to support IPv4 and IPv6 on the core, plus all the CPE equipments, which means for MSOs the price has doubled. Another cost is with the management tools and billing tools that have to support both IPv4 and IPv6, in addition to the complexity of troubleshooting when both stacks are involved. This solution, in addition, doesn't resolve the IPv4 exhaustion challenge and has to be combined with NAT4.4 or NAT4.4.4. The second technique is based on encapsulation. 6RD is for service providers with their core network still on IPv4, so they can encapsulate their end users' IPv6 traffic into IPv4. This technique has interest for some internet service providers and has been deployed in some places. But this solution doesn't resolve the IPv4 exhaustion issue and has to be combined with NAT4.4 or NAT4.4.4. For service providers who have their core networks on IPv6, DS Lite encapsulates their end users' IPv4 traffic into IPv6. This new solution has some interest by internet service providers and also solves the IPv4 exhaustion issue. The third technique is based on DNS plus NAT protocol translation. DNS 6.4 NAT 6.4 is for service providers who have their core networks on IPv6 and translate IPv6 end users' DNS and traffic from IPv6 to IPv4. This new solution has some interest for service providers. Okay, I will stop here because I want my fellow speaker to click from here. There's lots more. This is not the ending of the word, this is the beginning. मैं इसको भी upload कर दूँगा with all the other details you will have, ताकि you will not have any problem accessing this. Or I welcome you to the family of the Internet Society. Membership is available free today. I will approve it right there, right now. International membership in Geneva की सर्विस अभी आपको कर दूँगा approve. Thanks to डॉक्टर साहब, उन्होंने ये हमें कहा था कि आप लोगों के लिए करेंगे. Doing it, I am really proud that you will be part of the family. और आखिरी सवाल है, मेरा डिस्कशन खत्म है. उसको भी इनाम है. जनाब ये बताएं कि डॉक्टर विवेक साहब कौन सा होता है? मैंने उसको
हाँ, मैंने अब जिक्र भी किया था अपनी तारीखी खिताब में, नस्ल इस्लामाबाद 23 जून। हाँ स्विचिंग आता है स्विचिंग आता है। मैं ये आई विल लीव दिस आंसर टू डॉक्टर साहब, जो क्लोज टू इट होगा उसके लिए हम एक इनाम रखेंगे। हाँ, मेंबरशिप के ऊपर भी कलम इनाम है, तो बताइए जनाब। उसमें तो IPv6 आता ही जनाब, भारतीय में IPv6 आता है। तालिए भाई के लिए, बहुत जबरदस्त इन्होंने कहा। तो ये इसने तो बहुत सारा पेन पहले ले लिया, अब तो ये कल बाहर जाकर बेचना शुरू कर देगा सब, है ना। जी नहीं सर, आप सुपरवाइजर बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बात है, हम उनकी बात रखते हैं। डॉक्टर साहब अपनी किताब का नाम आप खुद ही बता दें। सर वो दुनिया में तो आ गई थी सर। तो ये डॉक्टर साहब से मैंने वादा किया था, एक और डॉक्टर साहब किताब जो लिखेंगे हमारे लिए, और रोड मैप जो पाकिस्तान के लिख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत चाहिए। तो मेरी दिल्ली फैंटास्टिक, बहुत शुक्रिया। ये माइक मत अगर हमारी मदद की, मैंने पूरा टाइम लिया 1 घंटा से। Fakhar Mirza. Mr. Fakhar is an eminent industry specialist and trainer having extensive experience of complex network design, technical management, project engineering and training and capacity building. Currently he is CTO of Nets International. His company National Engineers was formed in 1983 as a services and system integration organization in Pakistan. Since then it has established its direct presence in UAE, USA, with Ghana and Sudan in the pipeline. Mr. Fakhar has served more than 2,000 individuals till date, apart from volunteering into educational institutions to bridge the gap between students and the industry. Please welcome Mr. Fakhar. My name is Fakhar Mirza and I am from National Engineers. As far as educational background is concerned, I have done Bachelor's in Computer Science from Punjab University in year 2000, and then did different certifications in the field of Cisco primarily, and I am a Cisco certified instructor as well. Thank you very much Dr. Adil, Imran and Asif sir for giving me this honor to present on the prestigious forum of Pakistan. This is really an honor for me. Before we talk about IPv6 end user perspective, I would like to tell you people that most of the things which were told already to you by Asif Saab in that presentation are part of my presentation as well, and we are going to, basically the focus of my presentation is to bridge the past, the history of internet with the future of internet. So this is the agenda of today's discussion. Let's start with IPv6 end users perspective. The agenda is to have understanding on need of IPv6, which is I'm sure most of you already have, but we will go for this area. कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम speedily इस area में से move करें. And then we will talk about understanding of IPv6 direct and indirect communication. Then we will talk about IPv6 direct and indirect communication, then IPv6 migration strategies and IPv6 application and services. इन तमाम चीज़ों को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरे पास कोई पॉइंट्स नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। तो आज इन लोग के मेरे पास कोई मेरे पास ऐसी कोई इमदाद नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ गिफ्ट और एनीथिंग। तो आप चाहें तो बेशक सवालों के जवाब दीजिएगा या ना दीजिएगा, मेरे पास कुछ नहीं। ओके, सो 1 hour 45 minutes कोशिश है कि इसमें हम इसको वाइंड अप करें, एंड मे बी बिफोर दैट बिकॉज यू पीपल ऑलरेडी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट IPv4 एंड IPv6 as well. Let's talk about history of IPv4. We all know that IPv4 was originally a project by Defense Advanced Research Project Agency. World War II के लिए बनाया गया IPv4, and once World War II ended, universities mainly started using this network for research sharing purposes.
IPv4 was basically a packet switching network. Do we all know what is a packet? Anybody? Packet kya cheez hai? What is the difference between circuit switching and packet switching? हमारा डेटा डिफरेंट चंक्स में डिवाइड होता है, उसके फिर सीक्वेंसली तो वहाँ पर डेटा किसी पाथ के थ्रू भी जा सकता है, लेकिन वो फिर एंड पे बाइनरी Okay, so it means that जो डेटा है उसको चंक्स में डिवाइड करने के बाद उस पर कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं लगाई जाती जिसकी बेस पे इसको रिसीविंग साइड के ऊपर डिस्टिंग्विश किया जा सके या अंडरस्टैंड किया जा सके. दैट इज व्हाट वी मीन. डेटा इज 1001. अगर वॉइस की बात की जाए तो जो मैं बोल रहा हूँ ये डेटा है. अगर आप लॉग इन करते हैं किसी वेबसाइट में तो आप यूजर नेम पासवर्ड जो देते हैं वो डेटा है. सो डेटा विच यू एंटर फ्रॉम योर कीबोर्ड, क्या इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा डेटा भी लगाया जाता है या ये एज इट इज ट्रेवल करता है? दैट इज द डिफरेंस. इन पैकेट स्विचिंग द डेटा विच यू एक्चुअली पंच इनटू द सिस्टम उसको प्री पेंड किया जाता है एक और डेटा के साथ विच इज नोन एज व्हाट? हेडर्स. सो पैकेट और नॉन पैकेट कम्युनिकेशन में मेन डिफरेंस किस चीज का है? हेडर्स का. सो पैकेट में जो हेडर लगता है IPv4 के अंदर और जो IPv6 के अंदर उसमें फर्क है. We will talk about that. But primarily packet switching is all based upon headers. Headers overhead होते हैं या नहीं? They are overheads. अगर आप 64 किलोबिट्स पर सेकेंड की बैंडविड्थ की बात करते हैं उस पे जो एक्चुअल डेटा आप सेंड करते हैं वो तो कम है. जो उसके ओवरहेड्स हैं, जो हेडर्स हैं, वो क्योंकि उसके साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो आप अपनी बैंडविड्थ को हेडर्स को ट्रेवल करने के लिए भी यूज करा रहे हो. पैकेट स्विचिंग ऐसे ही है और यही वो टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट की डे वन से रूट्स हैं. यही वो टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट पे यूज हो रही है. सो पैकेट कंटेन्स डेटा एंड हेडर्स. हेडर्स के अंदर क्या चीज है? एड्रेस इंफॉर्मेशन, एरर कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन. जिस तरह अभी आप ही ने कहा कि पैकेट में डेटा मुख्तलिफ लोकेशन से अपनी डेस्टिनेशन पे आ सकता है. अब ABC अगर आपने सेंड किया तो ये DAC की फॉर्म में भी रिसीव हो सकता है. सो वी हैव टू रीऑर्गेनाइज इट, वी हैव टू रीऑर्डर इट टू मेक इट ABC अगेन, राइट? तो वो तमाम इंफॉर्मेशन भी हेडर्स में जाहिर है मौजूद होती है. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल IP के टॉप के ऊपर रन होता है और IP के टॉप पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये मेक श्योर करता है कि अगर कोई भी डेटा मिस हो जाए तो वो उस डेटा को रीट्रांसमिट करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे. तो TCP makes internet communication reliable, isn't it? If we use UDP over internet, it's not reliable. When we use TCP over the internet, it makes communication reliable. So, IP, Internet Protocol, is this a de facto standard? What is the difference between de facto and de jure standard? Any idea about the differences of these standards? देखें, एक चीज ऐसी है जो आप अपनी लैब्स के अंदर बनाएं, एक सॉफ्टवेयर बनाएं, डेवलप करें और उसको किसी अथॉरिटी से अप्रूव करवाने से पहले आप उसको एंड यूजर के हवाले कर दें. एंड यूजर उसको यूज करे और अगर उससे उसको कोई भी बेनिफिट मिलता है तो वो बगैर इस चीज के इंतजार के कि ये कोई अथॉरिटी ने अप्रूव किया है या नहीं उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे और वो प्रोलिफरेट हो जाए. तो ऐसे हर स्टैंडर्ड को डी फैक्टो स्टैंडर्ड बोलते हैं. ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे बना हुआ स्टैंडर्ड है. और डी जोर स्टैंडर्ड क्या होगा? जो बना के किसी अथॉरिटी से अप्रूव करवा के फिर पब्लिक किया गया. तो IP प्रोटोकॉल ओरिजिनली डी फैक्टो है बिकॉज ये तो डिफेंस एजेंसी ने अपने काम के लिए बनाया था और जब ये यूनिवर्सिटीज के हाथ आया ये नेटवर्क और उससे रिसर्च को शेयर किया गया तो दे गॉट द लुक एंड फील ऑफ IP प्रोटोकॉल एंड दे फाउंड इट वेरी वेरी इजी टू यूज. सो वो इस तरफ गए ही नहीं शुरू में कि ये कोई स्टैंडर्ड भी है कि नहीं. दे जस्ट स्टार्टेड यूजिंग इट बिकॉज इट वाज दैट इजी. इंटरनेट प्रोटोकॉल में मेन खासियत क्या है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ IP इंटरनेट प्रोटोकॉल? और इससे पहले क्या होता था IP से पहले? देखिए X.25 और ATM का आइडिया होगा. X.25 और ATM ये भी हेडर बेस्ड नेटवर्क्स हैं.
X.25 اور ATM کے اندر آپ نے اگر نوڈس کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ کو نیٹ ورک میں ان کا ایک ورچوئل سرکٹ پورا کنفیگر کرنا پڑتا تھا, پھر نوڈس آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آئی پی پروٹوکول میں دیر از نو نیڈ آف پرائر کنیکشن بٹوین ٹو پارٹیز. آپ کو کور میں کوئی تانا بانا نہیں بننا پڑتا دو نوڈس کا کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر پائیں. You just assign IP addresses, you just configure routing protocols, and IP is on its way. So core of the IP یا جو data network of the IP ہے, it does not require any virtual circuit to be configured before you start using it. So it's really flexible protocol. So that's why it was being used over the internet. So the internet was initially limited to universities and research institutions. Later on, it was in the hand of civilians. Addresses provide information on how to locate something, isn't it? Address یہی بات ہو رہی ہے میری. ایڈریس سے بیسیکلی آپ کو یہ کیا چیز پتہ لگتی ہے کہ ہم نے ایک ٹارگیٹ لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. ایڈریس آپ کو انٹرنیٹ ورلڈ پہ یا کسی بھی نیٹ ورک پہ کسی ٹارگیٹ لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. انٹرنیٹ ایڈریس کمبائنس ٹو پورشنس. جس طرح ڈیلی لائف میں ایڈریسز کی کئی ٹائپس ہیں. فون نمبر از آلسو این ایڈریس, پوسٹل ایڈریسز ہیں اینڈ سو آن. ہر ایڈریس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک جو اس کے ایریا کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور ایک جو اس ایریا میں ایک پرٹیکولر پوسٹ یا ایک پرٹیکولر لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اسی طرح آئی پی ایڈریس میں بھی آپ کو پتہ ہے دو پورشنز ہیں. کون کون سے دو پورشنز ہیں آئی پی ایڈریس میں؟ نیٹ ورک کا پورشن اور ہوسٹ کا پورشن. نیٹ ورک کا پورشن نیٹ ورک کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور ہوسٹ کا پورشن اس نیٹ ورک پہ کسی پرٹیکولر پی سی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, رائٹ. جو ڈیوائسز دو آئی پی ایڈریسز کے درمیان کمیونیکیٹ کرانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان میں سوئچز بھی ہیں اور راؤٹرز بھی ہیں. جب آپ سوئچز یوز کرتے ہیں دو آئی پی ڈیوائسز کے درمیان کمیونیکیٹ کرانے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ سوئچز ٹرانسپیرنٹ ڈیوائسز ہیں. آپ کو آئی پی ایڈریس سوئچز کی تو کنفیگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نیٹ ورک پورشن کا کوئی تعلق سوئچز کے ساتھ نہیں ہے. یہ نیٹ ورک پورشن کس لیے رکھا گیا ہے؟ یہ راؤٹرز کے لیے رکھا گیا ہے. Because routers are the devices, they are going to route your IP packets by the end of the day. They are going to choose the path. Now the IP routers, they keep only network portion in their routing table instead of the complete host portion. Because they have limited amount of memory. اس لیے آئی پی ایڈریس کے کتنے حصے رکھے گئے؟ نیٹ ورک پورشن علیحدہ اور ہوسٹ پورشن علیحدہ. So how to split an internet address into the network part and the host part has changed over the time. آپ کو پتہ ہے کہ جو آئی پی ایڈریسز تھے, آئی پی ایڈریسز وہ کلاس فل تھے اوریجنلی. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کلاس فل اینڈ کلاس لیس؟ کلاس فل میں یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اینی آئی پی ایڈریس ایکسپٹ کلاس اے, کلاس بی اینڈ کلاس سی. whereas in class less IP addressing you can design your own type of classes, isn't it? So as per the history of the internet, آئی پی ایڈریسز جب ڈیزائن کیے جا رہے تھے تو دو مکتبہ فکر تھے, دو طرح کی آئیڈیالوجیز تھیں. کیا ان ایڈریسز کو فکس رکھا جائے یا ان ایڈریسز کو ویریبل ان لینتھ کر دیا جائے. ایڈریسز کو ویریبل ان لینتھ اگر کر دیا جاتا ہے تو اس میں پروسیسنگ ایشو آتے ہیں, کیونکہ ہر ڈیوائس جس نے آئی پی ایڈریس کو میچ کر کے اپنا ایکشن پرفارم کرنا ہے, وہ ڈیوائس کے جو الگوریدمس ہیں وہ کافی کمپلیکس ہو جاتے اور سی پی یو سائیکلز بہت زیادہ یوز ہوتے. اس لیے آئی پی ایڈریس کو کیا رکھا گیا؟ وی آل نو, اس کو فکس رکھا گیا. اور کتنی بٹس پہ رکھا گیا؟ 32 بٹس کے اوپر اوریجنلی. سو دا ڈیسیژن واز میڈ فار فکس 32 بٹ ایڈریسز, اینڈ دس ڈیسیژن probably was made by a flip of a coin, head and tail toss, کہ فکس رکھا جائے اس وقت یا ویریبل رکھا جائے. But they ended up in a fixed 32 bit location for IPv6 addresses. اچھا, اب اس IPv4 ایڈریس, سوری, IPv4 ایڈریس کا جو فرسٹ 8 بٹس کا پورشن تھا, that was originally proposed as network portion, and rest of the 24 bits were originally proposed as the host portion. Originally there was no concept of class A, B اور C. یہ سوچا گیا کہ پہلی 8 بٹس کو کیا رکھا جائے؟ نیٹورک پورشن, اور ریسٹ آف دی 24 بٹس کو ہوسٹ پورشن. لیکن اس سوچ کو بھی
kill کرنے کے بعد they came up with an idea کہ اس طرح کرنے کی بجائے 256 نیٹ ورکس صرف بنانے کی بجائے ہم کچھ ایسی ویریشن لے کے آئیں کہ ہمارے پاس نمبر آف نیٹ ورکس بھی انکریز ہو جائیں اور ہم اپنے نیٹ ورک کو اسکیلیبل کر سکیں. So the idea was to convert IPv4 address space into categories, and we ended up in class A, B, C, D, and E. What is the difference between class A, B, C's functionality and D and E's functionality? Class A, B, C ایک category کے IP addresses ہیں, C اور class D اور E ایک different category کے addresses ہیں. کلاس اے میں کمیونیکیشن کس بیس پہ ہوتی ہے؟ یونیکاسٹ، رائٹ؟ یونیکاسٹ، 1-to-1 کمیونیکیشن. اینڈ کلاس ڈی از واٹ؟ ملٹی کاسٹ. ملٹی کاسٹ کس طرح سے کام کرتی ہے؟ ہاؤ ملٹی کاسٹ ورکس اور واٹ از دا بینیفٹ ان ملٹی کاسٹ؟ اینی ون؟ لیکن بینیفٹ کیا ہوتا ہے اس اوکے رائٹ. سو دیٹ از دا پوائنٹ. ایک پیکٹ کی کیا بنائی جاتی ہیں؟ کاپیز. اے بی اور سی کلاس میں اس کے ایڈریسز کو اگر آپ استعمال کریں گے تو ہر مشین کو اگر ڈیٹا کسی کو سینڈ کرنا ہے تو سورس سے اس کی ایک کاپی بن کے نکلے گی. سورس اس کو علیحدہ علیحدہ پیکٹ میں رکھ کے پھینکے گا. فار ایگزامپل ایک ویڈیو سرور ہے جس نے ویڈیو فیڈ سینڈ کرنی ہے تو سورس مشین کو جتنے بھی وزٹرز اس سے ویڈیو لینے کی کوشش کریں گے ہر وزٹر کو ویڈیو فیڈ ایک علیحدہ پیکٹ میں رکھ کے سینڈ کی جائے گی جس سے سورس کے سی پی یو سائیکلس جس سے سورس کی بینڈ وڈتھ کنزیوم ہوگی. کلاس ڈی میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ سورس ڈیٹا کو ایک ہی پیکٹ میں رکھ کے سینڈ کرے گا اور راستے میں آنے والے راؤٹرز not switches, layer 3 devices will make copy of those data grams اور ان copies کو intended audience کے لیے replicate کر دیا جائے گا. اب کتنی copies بنانی ہے کس کس کے لیے بنانی ہے یہ انٹیلیجنسی بھی ملٹیپل پروٹوکولز کے تحت اس راؤٹر میں سگنلنگ کے تحت ایڈ کر دی جاتی ہے کس ڈائریکشن میں copies دینی ہے اور کس ڈائریکشن میں نہیں دینی. سو کلاس ڈی بیسیکلی ویڈیو براڈ کاسٹنگ یا ایسی اپلیکیشن جو پروسیسر انٹینسو ہیں ان کے لیے یوز کی جاتی ہے. کلاس ای کے بارے میں کیا خیال ہے؟ IPv4 کلاس ای اینی یوز آف دیز IP ایڈریسز؟ جی ریسرچ پرپزز. اور اس میں کافی ایڈریسز اویلیبل ہیں, ایک رینج آف ایڈریسز اویلیبل ہے نا. اس میں ہم بات کر رہے ہیں IPv6 کی طرف جانے کی اور مین ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ ایڈریس کم پڑ گئے ہیں. کلاس ای کے ایڈریسز کے پیچھے کوئی فنکشنلٹی پروٹوکول اسٹیک میں نہیں ہے. دیٹس وائی اٹس فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اب یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ ان کے پیچھے کیوں نہیں کوئی فنکشنلٹی لکھ لی جاتی اور ان کو بھی کیوں نہیں ریٹریو کر لیا جاتا اور کچھ عرصے کے لیے ان کو کیوں نہیں استعمال کر لیا جاتا. یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن بیکاز IPv6 بن چکا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کافی کوششیں کی جا رہی ہیں. سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کلاس ای کہ اس کو کسی طرح ریوائو کیا جائے اور اس کو یوز کیا جائے. We will just jump to IPv6 because we have many more IPv6 addresses available over there. جب ہم نے کلاس لیس کیا تو ہم نے ڈی اور ای کلاس کو جی ہاں, because کلاس فل اور کلاس لیس میں سبنیٹ ماسک کا ڈفرنس ہے, رائٹ؟ سبنیٹ ماسک is something which represents the network portion. In class D and E there is no concept of subnet mask. Class D does not use subnet mask. Because class D IPs are always in the destination, they are never in the source. So whenever you send data to class D targets, it's always in the destination portion of an IP packet. اور اس میں mask نہیں ہوتا, it's all groups. There is no mask concept in class D and likewise no. جی یہ دیکھیے basically reserve is one type of D as well. So it means that the class D is for multicast, right?
So you are going to use class D for unicast. We are doing it because of the new media technologies and the devices like mobile phones and all that. They didn't have a foreign native network. Still less secure and still based on Androids and mobiles. So D is as good as IPv6 will come in. E को भी जो है वो स्विच में है. So रिजर्व बेसिकली जब आप बात कर रहे हैं तो अभी रिजर्व जो चल रहा है So you are going to retrieve this chunk in that result. So your demand is already met. Okay. Okay, but class D is basically multicast. Its functionality is multicast. We cannot retrieve its IP addresses. We can only retrieve, if that is the case, class E, because D's all IP addresses have got some functionality behind it. That is multicast functionality. So class A में क्या मसला था? It was way too big. Class B was also big. Class C was too small. तो किसी के पास अपनी मर्जी का सबनेट डिजाइन करने की ऑप्शन नहीं थी originally. So we needed more functionality. So we came up with classless addressing in IPv4. Class full addressing was better fit than original, but class A and B networks impossible to manage. So the solution was to partition large networks internally into sub-networks or called subnets. So IPv4 की जो हिस्ट्री है उसकी बात इसलिए की जा रही है कि हम ये देख लें कि इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं. ये भी डे 1 पे कोई बेस्ट प्रोटोकॉल नहीं था और शायद IPv6 को जब हम पूरी तरह से अडॉप्ट करें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी कई प्रॉब्लम्स हमें फेस हों और इसको भी मैच्योर होने में टाइम लगेगा. तो हम IPv4 के इतने पास में इसलिए चले गए हैं कि हम देखें कि ये भी शुरू में थोड़ा इमेच्योर था, इसको भी स्टेबल होने में टाइम लगा. तो IPv4 शुरू में बनाने वाले ने सोचा कि इसके एड्रेस फिक्स कर दिए जाएं या वेरिएबल कर दिए जाएं, फिर फिक्स कर दिए. फिर उसने सोचा कि इसका नेटवर्क पोर्शन 8 बिट्स पे छोड़ दिया जाए, नहीं, क्लासेस बना दी गई A, B, C. फिर सोचा गया कि क्लास A, B, C की डिवीजन तो बेहतर नहीं रहेगी, यूज IP एड्रेसेस पूरी तरह यूज नहीं हो सकेंगे, क्लास लेस का कॉन्सेप्ट आ गया. सो इट वाज फॉलोइंग इट्स होल पाथ ऑफ माइग्रेशन एज. सो जब आप IPv4 एड्रेस को सबनेट या VLSM करते हैं तो बाय द एंड ऑफ द डे यू सी इर्रेगुलर मास्क्स, राइट? इर्रेगुलर मास्क्स मींस आप क्लास A का /8 यूज टू है मास्क देखने का, क्लास B का मास्क /16 है, क्लास C का /24 है. अब ये /22 /23 /25 ये डिफॉल्ट मास्क नहीं है. तो ये मास्क कस्टम मेड मास्क हैं and that is the point from where classless means there is no class boundary. Addressing starts. So classless addressing की वजह से बड़ी देर जिसको सबनेटिंग और VLSM कहते हैं हमने IPv4 एड्रेसेस को बेस्ट और ऑप्टिमाइज वे में इस्तेमाल किया, नहीं तो आज से 20 साल पहले ही खत्म हो गए होते. ये छोटे छोटे इंजेक्शंस थे जो IPv4 को लगते रहे, जो उसकी लाइफ को इंक्रीज करते रहे. IPv4 अगर क्लास फुल से भी पहले नेटवर्क पोर्शन 8 बिट्स का होता तो ये उससे भी कई अर्सा पहले का खत्म हो गया होता. फिर क्लास फुल कर देने से और कंट्रोल आया, क्लास लेस कर देने से यूजेज पे और ज्यादा कंट्रोल आया. तो ये वो पॉइंट्स हैं जो IPv4 को आज तक लाइफ देते आए हैं. सो क्लास लेस एड्रेसिंग तक पहुंचने पे लाइफ वेंट इजी, एवरीथिंग वाज नॉर्मल. IPv4 स्टार्टेड सेलिंग स्मूथ आफ्टर क्लास लेस एड्रेसिंग. लेकिन जैसे ही IPv4 क्लासलेस एड्रेसिंग के बाद स्मूथ हुआ तो प्रॉब्लम्स क्या आनी शुरू हो गई. प्रॉब्लम्स ये थी कि बनाया गया था ये वॉरफेयर्स के लिए, मिल गया यूनिवर्सिटीज को रिसर्च एक्सचेंज करने के लिए. उसके बाद ये ऐसे लोगों के भी हाथ आ गया जो ऑनलाइन गेम्स खेलना चाहते हैं, जो अपने रेफ्रिजरेटर को ऑनलाइन करना चाहते हैं, जो अपनी कार में ऑनलाइन मैप्स देखना चाहते हैं, जो सोशल नेटवर्किंग करना चाहते हैं. तो इस इंटरनेट की जो डिमांड है वो बिल्कुल और तरफ निकल गई और इस एरा को हम मॉडर्न इंटरनेट कहते हैं, जिसमें अब नई नई जिद्दत ऐड करते चले जा रहे हैं. तो एंड यूजर्स जो हैं उनकी जो टाइप्स हैं वो बहुत डिफरेंट होगी इन मॉडर्न इंटरनेट. रिक्वायरमेंट्स और बढ़ गई. तो मॉडर्न इंटरनेट के अंदर IPv4 के एड्रेसेस की जरूरत और ज्यादा पड़ गई बिकॉज यूजर्स प्रोलिफरेट हो गए, बहुत ज्यादा यूजर्स इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए आना शुरू हो गए. IPv4 की एड्रेस जाहिर है इस पॉइंट से ऑनवर्ड एग्जॉस्शन की तरफ बढ़ना शुरू हो गए. IPv4 की मैक्सिमम एड्रेस स्पेस अभी भी US की कई यूनिवर्सिटीज के पास है और एज कम्पेयर टू पूरा एशिया
وہاں کی چند یونیورسٹیز کے پاس پورے ایشیا سے زیادہ آئی پی ایڈریسز ابھی بھی اویلیبل ہیں. تو پہلے تو ان سے واپس لینے چاہیے کہ انہوں نے بس اپنے پاس رکھے ہوئے. لیکن اینی وے کیونکہ یہ انہیں کا بیبی ہے انٹرنیٹ, سو دے ہیو رائٹ ٹو ہیو دوز آئی پی ایڈریسز ود دیم. اینی وے سو IPv4 کی ایڈریس اسپیس ایگزاسٹ ہو جائے گی, یہ پریڈکٹ 1990 میں کر لیا گیا. آج 2012 ہے, 2011 ہے, 1990 کے اندر ہی یہ پریڈکٹ کر لیا گیا تھا کہ IPv4 ایگزاسٹ ہو جائے گا. تب تو اتنے زیادہ ہینڈ ہیلڈ اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی, بٹ اٹ واز پریڈکٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اب 1990s میں جب یہ چیز پریڈکٹ ہو گئی تو تب IPv6 نہیں بنا, یہ اسٹینڈرڈز آئے درمیان میں پہلے. NAT stands for Network Address Translation and RFC 1918, جس میں آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم RFCs بناتے ہیں. تو RFC 1918 بھی غالباً آپ کی جیسے لوگوں کی طرف سے اپروو ہو کے گورننس ڈاکیومنٹ آیا, اور اس ڈاکیومنٹ نے یہ بولا کہ کلاس A, B اور C کے فردر کچھ ایسے آئی پی ایڈریسز ہیں جن کو پرائیویٹ ڈکلیئر کر دیا جائے. یہ ایسے ایڈریسز ہیں جس میں آپ نے اپنی یونیورسٹیز میں ایک لیب بنانی ہے, 10 لیبس بنانی ہیں, 20 لیبس بنانی ہیں, ہر لیب میں 100 سسٹم ایچ ہیں. تو آپ اپنی لیب میں پڑے ہوئے ہر سسٹم پہ ایک پریشیس آئی پی استعمال کرنے کی بجائے آپ کو ایک ایسا پول دے دیا جائے, ریزرو پول, جس کو آپ ری یوزیبلٹی کے کانسیپٹ کے تحت جب جہاں چاہیں استعمال کر لیں اور اس کا انٹرنیٹ سے تعلق نہ ہو, کالڈ پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز. پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز کی رینجز کیا ہیں؟ کتنے ایسے ایڈریسز ہیں جو پرائیویٹ ہیں؟ تو 10.0.0/8 کلاس A میں سے یہ پورا پول پرائیویٹ ہے, یعنی آپ انٹرنیٹ پہ اس کو یوز نہیں کر سکتے. یہ آصف صاحب سے چھین لیا گیا, یہ صرف اور صرف اب پرائیویٹ کاموں کے لیے یوز کیا جائے گا. اب کرنے کو اس کو بھی ریٹریو کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, RFC 1918 جب آئی تھی تب کی باتیں تھی, اب تو آئی پی ختم ہو گئے, دے دو واپس, یہ یوز کر لیں ان کو ہم. لیکن یہ پرائیویٹ ہے, RFC 1918 چارٹر کی روس ہے. اور اس کے علاوہ جی 172.16.00/16 سے لے کر 172.31.00/16 تک یہ پورے سب نیٹس بھی کیا ہیں؟ پرائیویٹ. یہ بھی ایک ہیوج اماؤنٹ آف ایڈریس اسپیس ہے جو ڈکلیئرڈ پرائیویٹ ہے. اس کے علاوہ جی اچھا 192 کلاس C ہے, اس کا ماسک کیا ہوتا ہے؟ /24, یعنی فرسٹ 24 bits آر آف نیٹورک پورشن. لیکن جو پرائیویٹ اسپیس ہے وہ /16 پہ, یعنی ایڈریسز اسٹارٹنگ فرام 192.168, اس کے 255 فردر چنکس having 254 usable IPs each are also private. So you will never see any IP address live on internet from these ranges as well. تو دیکھیے IPv4 ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں 4.2 بلین ٹوٹل ایڈریسز ہیں, ٹوٹل, جو کہ آپ 2⁻32 کے فارمولا سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. ان میں سے کتنے ہی تو ان ریسرچز کی نظر ہو گئے. RFC 1918 نے ایک حساب سے چھین لیا. کلاس جی تائیوان only. جی جی شور. میں ابھی جب یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے لیکن جب وہ بنا تھا تو امریکہ کی ڈیفینس میں تھا, کیونکہ IPv4 بس ایگزاسٹ ہو گیا. کس وجہ سے ہو گیا بھائی؟ سارے استعمال نہیں ہو گئے, کچھ ان کی غلط کانسیپٹ کی نظر بھی ہوئے ہیں جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے, آج کی ضرورت نہیں ہے. سو RFC 1918 کلاس D, ٹھیک ہے کلاس D تو ایک ویلڈ یوزیج ہے نا, یہ تو ملٹی کاسٹ ہے, لیکن کلاس E تھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کو تو ریٹریٹ کیا جا سکتا ہے. دیز آر دا بیک گراؤنڈ تھیوریز جو IPv4 میں کوشچنز ہیں جو ابھی بھی ریٹریٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن سینس جس میں آصف صاحب نے کہا اب IPv6 آ چکا ہے جس میں یہ تو پینٹس ہیں جو ہم ریٹریٹ کریں گے, اس میں تو ٹریلینز آف IP ایڈریسز اویلیبل ہیں.
So we should, yes, look ahead instead of going back. लेकिन हमें हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि मैंने डॉक्टर बाग साहब की बात को कॉम्प्लीमेंट किया तो रिसर्च वाली आईपीस है ना, अब नस्ट का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, डॉक्टर साहब काम करते हैं स्टिल, बट यू नीड टू गो बैक टू IPv4 रिसर्च इज अ लॉट क्योंकि IPv6 में आप बड़ी मजे की बातें नहीं है, क्या कहते हैं बैकअप IPv6 की बैकअप कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसलिए छोड़ दिया है ई वाला भी. अब नस्ट मांग सकता है ई वाले रिसोर्स में से भाई क्योंकि पहले तो ये जबरा के पास था, ICANN के पास आया, हमने इंटरनेट इंजीनियरिंग क्लास में भी RFCs का काम किया. 198 भी रिव्यूड और ISOPs में हेल्प करता है स्टैंडर्ड. आप सब इंटरनेट इंजीनियर हैं, आप खुद जाए बात करें और इंजीनियर्स के अगली की जब मीटिंग होगी, मैं इंटरनेट वालों की ब्लॉक में पाकिस्तान, आप उनसे बात करें कि वो RII से बात करें और ये रिसर्च वाली IPs की जो असल में सच्ची बात है, हम तो रिजर्व पूल के लिए दे रहे हैं गवर्नेंस दुनिया में. जब इमरजेंसी आती है बहुत सारे गवर्नमेंट बहुत देर होती है रिजर्व के लिए चलाना. दूसरा मैं स्टिल आई बिलीव के रिसर्च होनी चाहिए. जो स्टूडेंट्स आएंगे हमारे दौर में मशीन से की उड़ाने के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सारा मॉडलिंग प्रोफेशनल होना चाहिए. डॉक्टर साहब शायद चाहें ऐसा कि IPN पे काम करें तो IPv4 से वो काम शुरू करें. ये शुभ काम किया थोड़ा रखते हैं. राइट, सो IPv4 की जब एड्रेस स्पेस प्रिडिक्ट हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, आइडियाज आई NAT और RFC 1918 के, इन्होंने काफ़ी अर्सा IPv4 के हार्ट को पंप करने में मदद की. इनफैक्ट आज भी इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ की बेस के ऊपर IPv4 की लाइफ एक्सटेंड हुई हुई. अदरवाइज ये काफ़ी अर्सा पहले का डिप्लीट हो चुका होता. 90% of the Fortune 1000 companies are already using NAT. कोई कंपनी होगी जो अपने हर एक एम्प्लॉई के सिस्टम तक लाइव IP दिए हुए हो. Maximum are using NAT feature in IPv4 nowadays. और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है कि जब हम IPv6 की बात करते हैं कि इसको एकदम से ले आएं या ट्रांजिशन का कोई फेज हो और रास्ते में हम टनल्स को यूज़ करें, जो कि अपकमिंग स्लाइड में आएंगी. मैंने प्रेजेंटेशन चलाई थी अभी, तो उसमें वो बातें हो रही थी. IPv6 बिल्कुल किस दिन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इट्स जस्ट लाइक अ डे ऑफ जजमेंट कि आनी है क़यामत, पता नहीं किस दिन आएगी. Nobody as of today can predict कि ये तारीख होगी जिस दिन IPv6 हर तरफ होगा. लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज फेब में IPv4 के पूल अब तो बिल्कुल लॉक हो गए हैं, अब तो बिल्कुल स्पेस अवेलेबल ही नहीं है. तो अब शायद कोई अपकमिंग फ्यू ईयर्स के अंदर कोई ऐसी डेट अनाउंस हो जिस दिन IPv6 एंड टू एंड आ जाएगा. लेकिन एज ऑफ टुडे IPv6 किस दिन फुली इम्प्लीमेंट होगा इज जस्ट लाइक अ डे ऑफ जजमेंट. वी डोंट नो कि किस दिन वो तारीख आएगी. लेकिन लोग जी श्योर. मैंने कहा इसको आर्मेगेडन IPv4 में ये NAT और RFC 1918 का जो एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन था, इसने काफ़ी देर उसको प्रोलॉन्ग किया है. लेकिन इस सोल्यूशन के अंदर कुछ इश्यूज हैं. Whenever you configure NAT, it breaks globally unique address model. It breaks address stability. It breaks always on model. It breaks peer-to-peer model because NAT has always an impact on applications. Khas applications like FTP, for example. Let me just show all of them. FTP किस तरह से काम करता है? File transfer protocol. When you request your connection, it's on 21 port. Receiver of the connection on application layer tells you about on which port he is going to send and receive data. So connection आपने बनाया एक end user के साथ, NAT device ने आपकी रास्ते में ट्रांसलेशन कर दी. टारगेट मशीन ने आपको एप्लीकेशन लेयर पे बता दिया कि भाई इस दफा पोर्ट नंबर 10,000 पे बात करेंगे, लेकिन NAT डिवाइस की तो चीज़ नहीं पता. सो आपकी समटाइम्स ऐसी एप्लीकेशंस जो कि डायनामिक एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें आप हिट वन IP को करते हैं, रिस्पॉन्ड आपको हो सकता है दूसरा IP कर रहा हो, यहाँ तक वेरिएशन भी आ सकती है. यू हिट वन IP एंड अनदर IP इज रिस्पॉन्डिंग, और यू हिट वन IP ऑन X पोर्ट, उसी IP की Y पोर्ट आपको रिप्लाई करें. These are all known as dynamic applications. Peer-to-peer या file sharing applications mostly इसी dynamic nature को follow करती हैं. NAT इसको severely break कर देता है. Plus NAT इस एप्लीकेशन को भी ब्रेक कर देगा, which is मोबाइल IP.
We know about mobile IP. دیکھیں آپ لاہور سے اسلام آباد آئیں, اسلام آباد سے لاہور جائیں اور آپ اپنا انٹرنیٹ کنیکٹ کر لیں, تو کیا یہ ضروری ہے کہ راستے میں ایک ہی راؤٹر آپ کی ڈیفالٹ گیٹ وے بنا رہے گا؟ ہو سکتا ہے نا جیسے جیسے ٹرانسمیٹر چینج ہوں آپ کے راؤٹر کا جو براڈ کاسٹ ملٹیپلیکس میڈیا ہے وہ بھی چینج ہو. آپ پہلے راؤٹر 1 کی ایتھرنیٹ پورٹ پہ تھے, اب جیسے ہی مڈ آف دا موٹر وے پہ پہنچے اب راؤٹر 2 کی ایتھرنیٹ پورٹ پہ چلے گئے. اب راؤٹر 1 کی ایتھرنیٹ پورٹ پہ 10 کا سبنیٹ ہے, راؤٹر 2 کی ایتھرنیٹ پورٹ پہ 20 کا سبنیٹ ہے فار ایگزامپل. تو آپ کو آئی پی ایڈریس جب دوبارہ دیا جائے گا اس سبنیٹ میں تو اپلیکیشن تو بریک ہوگی. سو اسموتھ مائگریشن کرنے کے لیے آلدو کئی اور طریقے کار اویلیبل ہیں, لیکن نیٹ ان کے لیے نہیں چل سکتا. نیٹ ان سب کو بریک کر دے گا. لائک موبائل آئی پی کی ٹیکنالوجی اویلیبل تو ہے جس سے آپ وزٹنگ ایریا میں جا کے جی آر ای ٹنل بنا لیتے ہیں اپنے اوریجنل ایریا کے ساتھ, اور آپ کا وہی آئی پی جو ہوم آئی پی ہے وہ آپ جہاں پہ بھی ہوں وہ آپ کو ریچیبل ہوتا ہے. لیکن نیٹ اپلیکیشن اس چیز کو بریک کرتے ہیں. سو نیٹ نے جہاں آئی پی وی 4 کو ایک ایکسٹینشن دی وہاں وہ آئی پی وی 4 کے اندر نئی نئی آنے والی اپلیکیشن کی میچورٹی کو بریک کرنے کا بھی باعث بن رہا ہے. سو زیادہ دیر تک نیٹ کی مدد سے آئی پی وی 4 کی لائف ایکسٹینڈ اب شاید نہ کی جا سکے, کیونکہ اپلیکیشنز کی ریکوائرمنٹ ایسی آتی جا رہی ہیں جن میں نیٹ ایک بیریئر بنتا چلا جا رہا ہے, جن میں ایک ایگزامپل موبائل آئی پی کی بھی ہے. سو پیئر ٹو پیئر نیٹورکنگ ابھی ہم نے ڈسکس کیا, کیونکہ ڈائنامک پورٹ پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے, نیٹ اس کو افیکٹ کرے گا. ہم اسٹڈی یہ کر رہے ہیں کہ نیٹ کا افیکٹ کن نئی اپلیکیشنز کو بریک کرتا ہے. پیئر ٹو پیئر ان میں سے ایک ہے, موبائل آئی پی ان میں سے ایک ہے, اور پھر آن لائن گیمنگ, سوشل نیٹورکنگ, آن لائن اپلائنسز, آن لائن آٹو ٹیلر مشینز, آن لائن میپس فار ٹریکنگ, یہ تمام نئی نئی اپلیکیشنز ہیں جو ماڈرن انٹرنیٹ کے یوزر کی ڈیمانڈز ہیں. اس ماڈرن ڈیمانڈ کو کور کرنے کے لیے ایک تو ایڈریس کم ہے, ایڈریس کم تو ہے تھے, اس کی جگہ پہ نیٹ نے آ کے اس کو ایکسٹینشن تو دی, لیکن نیٹ بذات خود اب بیریئر بھی بنتا چلا جا رہا ہے ان تمام اپلیکیشنز کے لیے. So the modern internet user has a never ending wish list. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, اور کل کو سوشل نیٹورکنگ کے علاوہ کئی لانچ کر دی جائیں گی, پیئر ٹو پیئر نیٹورکنگ کے علاوہ کئی لانچ کر دی جائیں گی. تو وش لسٹ تو ماڈرن انٹرنیٹ یوزر کی نیور اینڈنگ ہے. جس طرح آصف صاحب کہہ رہے تھے ملینیم جو کیٹیگری ہے ہم سب میں سے, ان کی تو ایسی ایسی ڈیمانڈز ہوں گی کہ وہ خود ہمیں گائیڈ کر رہے ہوں گے کہ ہمیں یہ چاہیے, یہ ڈیولپ کر کے دیں. انہوں نے ایسو بنایا کل آئی ٹین کی میٹنگ میں انہوں نے